Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My beloved Guru Maharaj, His Divine Grace, Bhaktivedanta Swamy Prabhupada. Sacrifice, qualification, love, wealth, touched deeply the passion of a great soul, the passion of Krishna awakens from within the heart. All darkness is illuminated with light. Actually, spontaneously wants to share that gift with everyone or anyone. Srila Prabhupada I have the opportunity to please Srila Prabhupada. Therefore, I accept all of you as my life and soul. Exactly 40 years ago, on this day, I was sitting on that rock in the middle of the Ganges River in the Himalayas. It was the month of January of 1971.
At that time, I was alone. I had nothing except one thing. I believed that God would help me if I was sincere. Whoever we are, wherever we're from, whatever we have done or not done, Krishna will help us if we are sincere. Not always the way we prefer to be helped. But if we are sincere, we should know that whatever comes in our life is the perfect opportunity and the grace of God. It was also 40 years ago, 1971, just a couple days after Janmashtami, that my dear friend Gary and myself were sitting in this place at Keshigat on the bank of the Jamuna River in Vrindavan. And here we are again. The Jamuna River, like the Ganges, it's not just a flowing body of water. It represents, embodies the grace of Radha and Krishna. By bathing in the river, we become purified, sanctified, and blessed with bhakti or devotion. As Radha Gopinath Prabhu explained minutes before, that you are all like so many beautiful thousands of waves in the Jamuna River. And just seeing all of you is like taking a very holy bath and being sanctified and having my bhakti very much encouraged. But I never thought I'd see my father as one of the waves of the Jamuna River. But he's here. It is special. My father is 87 years old. He's not in the best of health. He can hardly walk. And he hates airplanes because he suffers so much when he's on them. When Radha Giridhari Prabhu and Krishna Chandra Prabhu invited him to come, he adamantly said, "No, I can't do it. I'm too old. I'll never make it." But then they asked him again.
And he didn't say anything. He just listened. Then they asked him again, and he said, I will come. He has of the love of all of you. When I was sitting on that rock in the Ganges 40 years ago, sometimes I would think, how my parents' hearts were totally shattered by what I was doing. That was the time I wrote them a letter. I'm living in a cave in the Himalayan jungles. Because I had to be honest. And sometimes I thought on that rock, is my heart harder than this rock that I'm sitting on? That I'm doing this to people who gave their life, their soul, their everything to help me in every way they knew how to do? But I believed very deeply that if God, whoever he may be, if he is pleased by my sincerity, he will compensate, and he will bless them, and he will give them the understanding and the appreciation, and he will give them grace. And what a beautiful experience it is to my heart to see how Krishna has done just that. Krishna tells in Gita, Ananyas chintayanto mam ye jana pariyupashate, that if we just approach him with sincerity, the Lord will carry what we have, carry what we lack, and preserve what we have. That concept can be extended in many ways. One is, if we please Krishna, just with our sincere and earnest effort, then all of our hearts' desires for the welfare of others can be fulfilled. And today, the friendship I have with my father and my brothers, and previously with my mother, was deeper and greater than ever before. And I never had to compromise my spiritual values. And I think this is a serious lesson for everyone. We never have to compromise our spiritual values. But we should follow them in a spirit of compassion. Today, fanaticism, sectarianism, which are just manifestations of nothing but egoism, is so prevalent in spiritual circles. But what Srila Prabhupada and all the great true saints have taught us
is we should uncompromisingly follow our spiritual values in a spirit of compassion, in a spirit of being an instrument to encourage, uplift, and inspire people. And if we have that spirit, we can be empowered, each and every one of us, way beyond our farthest imagination. My dear Father, I thank you for your lifelong support, care, and love. I remember when I was 18 years old, about to go to college, he said, "Whatever you do, I'm always with you because I love you." I tested that promise beyond his imagination. And not even for a second did that promise ever waver. I thank you. And seeing his relationship with so many devotees in such a deep way. Balaram Prabhu, Radha Giridhari Prabhu, Krishna Chandra Prabhu, Yagya Purusha Prabhu, Chandramali Maharaj, Srinathji Prabhu, and so many. I remember when my mother was in her last days, she hardly could recognize anything or anyone. And when a person is like that, even loved ones have no desire to see them. But Krishna Chandra Prabhu, Radha Priya Devi, I believe Priyavrat was there. I'm not sure if Karuna Manjari or Radha Devi were there. They traveled thousands of miles just to see her. And for a long time, Radha Priya was holding my mother's hand. And my father, he called me on the phone. I wasn't even there. He said, "The love that these people have, none of our relatives have. None of our best friends have." And after that, the only words my mother was saying was Hare Krishna and Muffet Lal. Yes? She hardly said another word. If someone tried to talk to her, she'd go, Muffet Lal. Or one time I was with her and my father for 20 minutes was trying to get her to say something. She was sitting there smiling. And he was bringing up memories of the past and so many other things. And she wouldn't say anything. And then he said, "And here's your son, the Hare Krishna." And my mother smiled and said, "Hare Krishna." And that was her, along with Muffet Lal, that was her favorite words.
And when my family decided, while I was still in India, to cremate my mother's body and give the ashes to me to bring to India, it was very special. That's how much all of you mean to them. And that's how much my devotion to Krishna means to them. Thank you. And my friend Gary, when we were young, we were practically just the same. We had the same hairstyle. He had a big beard. I tried to imitate, but it didn't work. Nothing came out. But we had the same weight, the same bodily size, the same values. We did the same exact things every day. No need to go into details about that. We were practically identical to each other in every way. And we were brothers and best friends. And now, 40 years later, we're completely opposite in every way. Our hairstyle, what we do every day, definitely our bodily size and weight and form. From a material perspective, we have nothing in common. But I think Gary will agree that the friendship and the love that we exchange is thousands of times deeper and greater than it ever was when we were young. Which is a beautiful lesson. That when love comes on a spiritual platform, it's transcendental to all these material considerations. It's a thing of the heart. And bhakti is that means by which hearts and souls connect, unified by the grace of God, by the grace of Krishna. And seeing, it's inconceivable to me, seeing Gary, a best friend of so many of our devotees here in Bombay, and so many of our devotees, best friends of Gary. Because people we share our lives with, we should always be grateful to Krishna for that blessing. Srila Prabhupada taught us that a true devotee is Saragrahi, one who seeks the essence within everyone, in any situation, within our spiritual path, within our relationships,
within our occupations, to seek the essence. If we seek the essence, we see beauty and hope everywhere. If we become distorted in our vision and look for the superficial aspects of things, then our mind becomes obsessed with ups and downs, hankering, lamenting, the dualities of success and failure, pleasure and pain, health and disease, honor and dishonor, pleasure, pain. But if we look for the essence, we become transcendental to these dualities. Because the essence is the grace of God, the grace of Krishna. Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana. Every living being is a child of Krishna, a child of Sri Radha, a spark of God. And this entire material existence is emanating from Krishna. Sarvasya chaham hridi. Krishna's in every heart. Everything is emanating from him. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. And if we look for the essence within our own spiritual path, we will find the power to see the beauty in other people. And to be compassionate. When Srila Prabhupada asked us in his last days to show our love for him by how we cooperate, there's only one way to do that. To really seek the essence. If we're not seeking the essence of the opportunities we have with each other, our relationships with each other, if we don't seek the essence in each other and in the world around us, then we'll have many excuses to fight, to hate, to quit, to cheat, to be miserable, depressed, to complain, criticize. But if we seek the essence, although everything else is the same materially, we find hope. The Bible says, seek and ye shall find. If we seek the essence will be revealed. And that essence is Krishna, who's all beautiful, all loving, all playful, all attractive.
Krishna says, one who sees me everywhere and everything in me, for him or her, I am never lost, nor are they ever lost to me. Our sadhana is a way of seeking Krishna. When we sit down to chant our japa, or when we stand up and dance in kirtan, when we're hearing Srimad Bhagavatam, either reading or in a class, when we come to the temple for the darshan of the deity, when we're serving, doing seva among devotees, our consciousness should be to seek that essence. And when we put that in the focus of our relationships and every aspect of our life, what we do, how we do it, we become empowered. This was the art that Krishna revealed to us in the great scriptures and through the hearts of the saints. And it is the art that Srila Prabhupada taught us. Not to compromise our spiritual values, but to seek the essence within our spiritual practices. And through the gifts we receive from that, we are able to see the essence in everything and in everyone. Srila Prabhupada would quote, Dinahina yata chilo harinam udharilo, tara sakshi jagai madhai. That even the most hardened, cruel demons, like Jagai and Madhai, can be transformed by the power of God's names. Nityananda Prabhu, he saw that potential in their hearts, and they became saints. In the same way, Srila Prabhupada, when he traveled around the world 12 times, he saw that potential in everyone's hearts. And so many people became transformed. And in the same way, through our sadhana, our spiritual practice, and through our prayer and practice, we should cultivate seeing that potential in everyone and in each other. Where there is selfishness, Maya will provide innumerable excuses to complain and to divide us. But where there is actually a spirit of service, Krishna will reveal to us every reason to be grateful and united. Within this beautiful assembly, we have people from many countries, many races, religions,
caste, economic status, educational qualifications. Vidyavanaya sampane brahmani kavihastini suni chaiva swapake cha pandita samadarshana. Wisdom is to see the unity of Krishna's presence in all of our hearts. And to see all of you today so united, without passing judgments on each other, is a testimony of the beauty of bhakti, or sincere devotion. Such a nice view of the Jamuna River today. This arrangement that our devotees made is a replica of Keshi Ghat. It was here at Keshi Ghat that Keshi appeared in the form of a gigantic horse. His purpose was to kill Krishna and kill all of the residents of Vrindavan, Krishna's loving family. Krishna was just a small boy, a little cowherd boy. And Keshi was so huge. This mystic yogi, by his powers, opened his mouth and roared. His galloping was creating earthquakes. His tail was scattering the clouds. His eyes were ferocious. And Krishna took his little hand, which was so soft, that little hand that would play the flute. He put it in Keshi's mouth, stuck it in Keshi's mouth. Krishna's hand was like a lotus flower, and his fingers were like the softest lotus petals. When he played on his little bamboo flutes, his fingers would so gracefully and tenderly dance on the holes of the flute. And such deeply emotional sound vibrations, the manifestation of the love of Krishna's heart would come from that flute to charm everyone's hearts. But now that tender little lotus-like hand was plunged into the mouth of this most evil, powerful asura. And his hand expanded and expanded and expanded, because Keshi's mouth was many times bigger than this pandal we are sitting in. And Krishna's hand was probably not much bigger than our hands. But
while it was inside, it became so big, Keshi suffocated and was liberated. He returned to the spiritual world. And then Krishna took his bath after doing this at the Keshi Ghat, where we are sitting today. And this story is very instructive. Krishna is in all of our hearts. We may not be able to see him at this time. He may be in a very small size. But if we turn to him with sincerity, by being the servant of his servants and chanting his holy names, then Krishna expands his beauty, expands his grace, expands his mercy within us, completely destroys our ego, our lust, our envy, our anger, our arrogance, and our illusion, and liberates us in this very life. Yegatamam prapadyante. If with sincerity we turn to Krishna, he expands his all-attractive, loving, beautiful mercy within us. And however big our egos, however big our material attachments and our vices may be, like Keshi, we will be liberated. And it is in this spirit, with this hope, that we chant Krishna's holy names. As we get older, we get more and more experience of how illusory time is. My father is 87 years old, but if you talk to him, he has the youthful enthusiasm of a teenager. But his body doesn't facilitate that. I remember Srila Prabhupada used to tell us when he was in Jagannath Puri, he said, I used to run and go in the ocean. He said, now I cannot do those things. I'm walking with a cane. Myself, 60 years old. But what does that mean? The body like a set of clothes or like a motor car. It has its youthful time, it has its attractive time, and then it starts deteriorating, getting older. And there's
a very limited amount that we can do about it. But the spirit, for a materialistic person, the spirit to enjoy never goes away. And for a devotee, the spirit to serve never goes away. And in this way, old age is such a blessing. You have something so wonderful to look forward to, because it gives us a very, very clear realization of how illusory this body and time really is. Every moment is an opportunity to connect with eternity. We don't have to wait or procrastinate. And devotional service or bhakti is the means by whoever we are, wherever we are, we can connect to our own eternal essence. By honestly and sincerely trying to seek the essence of pleasing God, pleasing Krishna in whatever we do. I am so grateful to my Guru Maharaj, Srila Prabhupada, for inspiring such a wonderful family as all of you. And we should never forget this, that we are a family. And as a family, we should not take advantage of each other. As a family, we should act, speak, live in a responsible way, that we are all contributing to the spiritual, physical, emotional welfare of each other. We should all take responsibility to behave in a way that brings happiness and hope to each other. This concept is the foundation that we try to build Radha Gopinath Temple, Bhaktivedanta Hospital, Gopal's Garden, and all the other projects. Because this is the concept that Srila Prabhupada has inspired us all to follow. There's no reason to complain or blame others. And even if there is reason, all it does is make things worse. We should, each and every one of us, take serious responsibility to speak and behave properly in such a way that it will inspire true devotion and true happiness in each other. And it will create a happier, more united family. When Lord Chaitanya manifested his Leela as a devotee after coming back from Gaya, and Srivas Thakur was told about this, in ecstasy, he cried out, "Let our family expand."
Bhaktivinoda Thakur, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they prophesied and willed that Krishna's names would be in every town and village throughout the world. In a deeper sense, what they really mean is this family environment among devotees will expand throughout the world. Because in reality, Aham Bija Pratapita, Radha and Krishna are the mother and father of all living beings. We are eternally a family. To take responsibility, to seek the essence, and to act in that spirit will liberate us and so many others. Every moment we have that opportunity. I thank you from my heart of hearts to my dear God brothers and God sisters. His Holiness Radhanath Swamy Guru Maharaj ki. Now we will have Vyas Puja offerings by various devotees. अरे यही दो ना ये मिश्री इधर से ही चालू कर रहे क्या आप? हाँ एक्चुअली इफ यू visit नहीं ऐसे बैठे हैं अरे वो you sit like this actually वो I ये थोड़ा
If someone is online, उड़ गया मैं देखा से उड़ गया बल्ब उड़ गया मैं देखा चला ऑन हुआ बल्ब खराब हो गया अभी देखा उड़ गया बल्ब उड़ गया अभी हम देखे नहीं उस स्पार्क आया बल्ब उड़ा नहीं है, ऑटो कट हो जाता है। बहुत जोर आवाज आया कड़िक करके Proceed the program. Don't worry about project. मेरा पेट में काला कर दिया Hare Krishna. So we'll start the offerings. So first, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are starting the offerings. So Vallabh Chaitanya Prabhu will speak about the importance of Vyasa Puja. And then Prabhu is going to share the pastimes of what are interactions he had with Maharaj and about what Maharaj's mood and everything. So I request all devotees to be ready because I have the names with me. So whoever is available online or here personally, so they will be coming. So it will be not in particular order because as devotees are in online also, here also some devotees are engaged in seva. So
And if there is any aparas or in following the order, please forgive us. So we request now His Grace Vallabh Chaitanya Prabhu to glorify Maharaj. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सब लोग शांति बनाए रखिए, सब लोग शांति बनाए रखिए, सब लोग शांति बनाए रखिए, दया करके बाहर जाइए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी गुरु महाराज की नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी भाष्यन्ते विसता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक रूप से आज के इस श्री परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा तिथि में हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यास पूजा का अर्थ है कि हम व्यास देव जी को सम्मान करते हैं और जो भी गुरुजन हैं वो सब लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रतिनिधि बोलते हैं, भगवान के ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। जिस प्रकार बोलते हैं कि एक पोस्टमैन होता है, वो पोस्टमैन जो है चिट्ठी लेके जाता है, किसी को चिट्ठी देते तो चिट्ठी लेके जाता है, तो चिट्ठी लेके जाता है तो चिट्ठी जो है उसको कुछ वो करता नहीं, मतलब जो चिट्ठी लेके जाता है तो चिट्ठी को कुछ खोल के नहीं पढ़ता है या उसमें कुछ अपने मन से नहीं लिखता है या वो किसी दूसरे घर में दे देता है। वो चिट्ठी लेके जो एड्रेस है, जो चिट्ठी मिलता है उसको निकाल के एड्रेस जाके वहां ड्रॉप कर देता है। इसको ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया बोलते हैं। उसमें अपना कुछ एडिशन डिलीशन नहीं करते। तो बोला कि आज के इस दिन में हमें अपने गुरु महाराज के इस जन्म तिथि पे, उनका ये बर्थडे है, बर्थडे मनाते हैं ना, बाहर बर्थडे मनाते हैं लोग, इतना धूमधाम से है ना, पार्टी फ्लोट करते हैं, नौका विहार करते कई लोग। तो गुरुदेव के जो उनके शिष्य हैं, अपने गुरु जो उनके कर्णधार हुए, उनका जो जन्मतिथि है बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, चाहते हैं और करते भी हैं। जैसे कल से बहुत है ना उत्सव चल रहा है मंदिर में, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। ये सभी भक्तों ने मिलकर डेकोरेशन किया है सुंदर, कोई बाहर के लोगों ने नहीं किया है।
जितना भी डेकोरेशन है सभी भक्तों ने मिलके किया इस डेकोरेशन को। तो व्यास पूजा तिथि मतलब ये व्यास पूजा बोलते हैं। तो बोले कि ये परंपरा में चला जाता है, कोई भी गुण कीर्तन माने जो भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनको जो भी मिलता है वो अपने गुरु को अर्पण कर देते हैं और उनके गुरु को अर्पण करते हैं और ऐसा करके गुरु परंपरा में भगवान कृष्ण तक पहुंचता है। तो जो उनको मिलता है वो अपने गुरु को अर्पण करते हैं। हम भगवान ऐसे देखा जाए तो व्यासदेव जी देखा नहीं, भगवान के इनकारनेशन है व्यासदेव जी, तो उनको हम सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास पूजा तिथि का यही अर्थ होता है और क्योंकि जो गुरु होते हैं उनको सम्मान लेना पड़ता है, वो उनकी इच्छा नहीं होती है। आज के दिन में उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं लोग, बहुत उनका गुणगान करते हैं, मगर वो हमेशा क्या करते हैं, वो अपने गुरु को याद करते हैं और जो भी उनको जो मिलता है वो अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती थी तो बहुत जोर शोर से गुरु पूजा हो रही थी। प्रभुपाद जी बैठते थे, कई बार है ना पर्सनली प्रभुपाद बैठे रहते थे व्यासासन में और गुरु पूजा होती थी। तो प्रभुपाद आंख बंद करके मग्न होते थे, ध्यान लगाते थे। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद आप ध्यान लगा रहे, आप बंद आंखें बंद करके रखे हैं, ध्यान लगा रहे, इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा सब जय प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको। बोले मैं अपने गुरु को स्मरण करूं। तो ये भावना होती है, वो अपने गुरु को स्मरण करते हैं। ये रिमेंबर देयर स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो ये उनका विनम्र भाव है और ऐसे करके परंपरा में व्यास देव जी तक पहुंच जाते हैं। तो ये व्यास पूजा तिथि के बारे में श्री राधानाथ स्वामी महाराज मेरे शिक्षा गुरु हैं और उन्होंने काफी स्नेह दिया है और काफी उत्साह प्रदान किया है भक्ति में मुझे, जिसके हेतु मैं बहुत आभारी हूं उनका। उनके चरण कमलों में मैं सदा विनती करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वो सदा हमें अपने चरणों का आश्रय दे के रखे, उनके हेतु की कृपा बरसाते रहे अपने ऊपर, मेरे ऊपर। तो एक बार की घटना है, मतलब ये 2 साल पहले हुआ, 2 साल की बात है कि है ना, हम लोग जी भी गए थे, इनिशिएशन सेरेमनी था और इनिशिएशन सेरेमनी था मतलब महाराज दीक्षा दे रहे थे, बहुत सारे डिवोटीज को दीक्षा दे रहे थे महाराज। दीक्षा दिया उन्होंने, मतलब वो इवनिंग में कोई इनिशिएशन सेरेमनी था, मॉर्निंग में बाउस था, तो उसके बीच में उस दिन फिर प्रसाद लेना था, बहुत भूख लगी सबको, 12 से कुछ फास्टिंग भी था। तो हम लोग सब गए और जीवी में एक वृंदावन कॉटेजेस है जहाँ, उधर बहुत सुंदर एक हट है, वहां पे वो प्रसादम का एरिया है, तो वहां पे हम लोग प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद ले रहे थे, हम लोग ने पिज्जा ऑर्डर किया था, लोग पिज्जा खा रहे थे और अचानक महाराज वहां आ गए। अचानक हम लोग सब देखे, प्रणाम किए महाराज को, तो महाराज उठ के सीधे सभी टेबल का परिक्रमा किया, हम लोग जिसमें बैठे थे, मैंने कुछ कर नहीं सकते, महाराज घूम घूम के देखे प्लेट में, और फिर बोले बंगाली प्रसाद हुआ, ऐसे करके महाराज ने सरकास्टिकली बोला बंगाली प्रसाद हो, उन्होंने ऐसा बोला, सब पिज्जा खा रहे हैं मगर बोला बंगाली प्रसाद, सबको हंसी आ गया। तो महाराज बंगाली प्रसाद अभी है ना, तो फिर महाराज को हम लोग बोला महाराज को समझ में आ गया हम लोग पिज्जा खा रहे हैं। महाराज एक चक्कर में ऐसे करके देख लिए। मैं अनंत मोहन को वहां थे, हम लोग दोनों थे वहां,
महाराज बोले कि आई एम सो ईगर टू ईट बंगाली प्रसाद। महाराज बोले कि व्हेन आई एम कमिंग टू कोलकाता, आई एम कमिंग टू मायापुर, एंड both of you should come to Kolkata, to Mayapur. And since many days, वो उनकी विनम्रता है, ऐसा बोल, many days we never had an association, and I want to eat prasadam, Bengali prasadam. वही घटना गई, सब लोग फिर खाए, फिर लज्जा, सब लोग खाए मजे से, फिर बोले रिलैक्स, ऑनर प्रसादम, बी हैप्पी, डोंट वरी, चले गए। फिर दूसरे दिन अचानक मिले महाराज, और फिर से उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गया तुम लोग आए नहीं, हम लोग ऐसे वॉकिंग कर रहे थे तो महाराज ऐसे आए, तो हम लोग जा रहे थे तो मिले। फिर से उन्होंने बोला कि आप लोग मायापुर आइएगा, आप लोग से मिलना होगा, है ना। फिर अनंत को बोले कि आप कब बंगाली प्रसाद कुक कर रहे हैं मेरे लिए। फिर से उन्होंने ऐसा बोला, कभी साधारणतः इतनी बार नहीं बोला था। मैंने उस जर्नी में, उस यात्रा में 3 बार उन्होंने ऐसा पकड़ा बोला। मैंने अनंत को बोला, महाराज तो बहुत इतने बार बोल रहे हैं, ये 3 बार बोल चुके हैं 3 दिन में। फिर एक बार इंटरेक्शन हुआ, मैंने मंदिर में, वहां का जो टेम्पल हॉल है, तो मैं बोला जाना चाहिए, जीबीसी मीटिंग्स में महाराज आने वाले थे। फरवरी में इनिशिएशन था मुझे जहां तक याद है, और मार्च में जीबीसी मीटिंग्स था सर, उसके तुरंत थोड़े दिन के बाद मैंने जीबीसी मीटिंग्स था, और हम लोग का इधर फिर तैयारी चल रहा था। फिर हम लोग बोले महाराज डायरेक्ट कोलकाता एयरपोर्ट दमदम से उतर के चले गए मायापुर। हम लोग बोले टाइम तो नहीं होगा, कैसे करेंगे, कुछ चल रहा था हम लोग का, और मुझे बोला चलना ही होगा, कुछ तो चलना ही होगा, जाना होगा, हम लोग को जाना चाहिए। बोला ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम लोग ने भरत चंद्र को फोन किया कि हम लोग मायापुर आ रहे हैं, तो महाराज बोले थे। और मतलब जब मायापुर पहुंचे तो कुकिंग, तो भरत चंद्र को आए, जैसे पहुंचे हम लोग मायापुर, पहुंच के सीधे बोले कि किचन में जाइए, कुकिंग करिए, महाराज आज ही प्रसाद लेना है, आज ही प्रसाद लेंगे, तुरंत चले जाइए, कुकिंग कीजिए। हम लोग दौड़े, एक प्रभु जी हैं वहां, सुबह कृष्ण प्रभु महाराज के डिसाइपल, पुणे से हैं वो लोग थे, उनके घर में वो लोग मतलब, और एक महाराज के सर्वेंट थे, तो है ना, चाहते हैं वहां तुरंत हम लोग बहुत सारा सामान अनंगों को हम लोग परचेज भी करके ले लेते, सब्जी वब्जी, बोले कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ मसाला वसाला अगर है कुछ रेडी करके बोले थे। तो हम लोग पहुंच गए, पहुंचने के बाद तुरंत हम लोग एकदम गए किचन में, हाथ मुंह धो के हम लोग तुरंत लग गए कटिंग वटिंग कुकिंग करने के, सब तैयारी किया। तो मेरे को अनंगों को बोले तुमको राइस बनाना होगा और दाल, बोला ठीक है राइस तो है मतलब, और बोले कि बाकी तुम कटिंग वटिंग कर दिए, कुछ कुछ ये है। फिर वो बनाते गए, तो उनका जो महाराज के सर्वेंट थे, वो उनको सीखना था, वो हर एक चीज अनंत से पूछने लगे, इसमें क्या मसाला डाला है, ये क्या है। बोला देखो हम ये कोई रेसिपी क्लास नहीं दे रहे, अभी हम कुकिंग कर रहे हैं, आपको शांति से कुकिंग करना दो पहले, फिर बाद में हम सब तुमको रेसिपी बताएंगे। कुकिंग करते हुए मेरे को पूछेगा तो मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। तो फिर सारा आइटम कुकिंग हम दाल बना लिए, राइस बनाया और राइस गीला हो गया। इतना दिन से अभ्यास नहीं था राइस बनाने का। राइस में अगर आप थोड़ा गड़बड़ किए तो ज्यादा गीला हो जाएगा, झरझर राइस बोलते हैं ना बांग्ला में, झरझरे राइस नहीं हुआ। अब वो एंजाइटी हो गया, क्या करें नहीं करें, टेंशन आ गया मन में कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, बहुत परेशान हो गए। तो भाग के गए ब्रह्मचारी किचन में, बोला टाइम, बोले महाराज खाना जल्दी टिफिन पैक करो, पहुंच जाओ उनके रूम में, आप ही लोगों को सर्व करना है। सिर्फ मैंने दौड़ के गए, तो वहां पे ब्रह्मचारी किचन में वो प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी किचन के इंचार्ज बोले नहीं अभी तो राइस नहीं मिल सकता, ये भोग लगेगा तभी ये मिलेगा, और भोग लगने का एक टाइम है।
गधा में गए दौड़ के, तो गधा में बोले मोटा राइस, पतला राइस नहीं बना है। तो उठा के ले आए, रख लिए, और गीला राइस भी हम बोले रख लेते हैं, टिफिन में डाल के ले गए हम लोग। फिर हम लोग रूम में पहले घुस के ऐसे थोड़ा रेडी करने वाले, बाहर अपोजिट में ब्रजचंद्रपुर इनका रूम था, सर्वेंट लोग का। तो महाराज आए, हम लोग देखे महाराज आए, तो हम लोग बाहर निकल के प्रणाम किए, बोले हरी हरी, सो भाई प्रसाद इज रेडी। उनको पता है कि प्रसाद को लेंगे, तो मैं प्रसाद इज रेडी, बोले वेट अ मिनट। फिर अंदर गए, उन्होंने सब बाटी मतलब प्लेट चम्मच ये सब रेडी करके वो रखे थे, तो ले जाके सजाए। हम तो हमेशा आनंद मोड के पीछे ही बैठते थे, हम जैसे सर्विंग नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत एक्चुअली बोल्ड है, बता सकते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे बात करना चालू कि मतलब कुछ बोलेंगे, तुम्हारे बोले वेट अ मिनट, तो जीबीसी मीटिंग से आए थे और उन्होंने लेक्चर चालू कर दिए प्रभुपाद, और गंभीर हो गए। फिर गए वॉशरूम में, थोड़ा मुंह हाथ धोए, फिर आ गए, बैठ गए और खाने लगे। इसका मतलब खाते वक्त कोई बात मत करना, लेक्चर चला दे तो मतलब सुनेंगे लेक्चर, खाएंगे। तो फिर बोले कि क्या क्या खाली बता दो, आइटम्स बताते जाना, देते जाओ, आइटम बता दो। मेरा तो धुक धुक कर रहा है, अभी गीला राइस, वो मोटा राइस में क्या होगा, मोटा राइस सबसे पहले तो राइस ही देना है, वो राइस और पड़ेगा अभी, तो कैसे होगा। हम क्या गीला राइस को नहीं ऑफर किए, बोले मोटा राइस दे दिए। ठीक है महाराज, बोले तो नहीं खाएंगे, बोले कि एनी अदर राइस, कोई गीला राइस वापस, तो गीला राइस ऑफर किए। हम और आनंद को दोनों रूम में बस, और महाराज गीला राइस दिए। देखिए महाराज बोले ठीक है दे दो। इतना नर्वस टेंशन हुआ उस दिन। मॉर्निंग में प्रसाद नहीं लिए हम लोग, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं लिए, उसके बाद सर्विंग, और फिर 1:30 बज रहा ना 2 बज रहा था, पता नहीं 1:30 बज रहा, इसलिए तो फिर मतलब बाकी आइटम आनंद बोले दिस आइटम दिस। और हम लोग दीनदयाल प्रभु हैं या उनके दोस्त कन्नड़ साल के दोस्त हल्दर पिता थे, किसको हम लोग भेज दिए नवद्वीप, जल्दी से जाओ। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एक दुकान है नवद्वीप में, जैसे आप बाहर निकलेंगे गंगा के बाहर, लेफ्ट साइड में दुकान, वहां से मिष्टी दही मंगाते थे और संदेश। मिष्टी दही संदेश उनको बहुत पसंद था, हम लोग सोचे उसको मंगाते हैं, बहुत सारा मंगाया था, सब सर्वेंट्स लोग थे, बाकी लोग खाएंगे, तो मिष्टी दही मंगा के रखे थे, वो भी सब रेडी करके रखे थे। तब फिर महाराज जब खा लिए, जब डेजर्ट्स का समय आया, तो बोले अभी बंद कर दो प्रॉपर लेक्चर, बोला नाउ आई विल टॉक टू बोथ। नाइस प्रसादम, बोले कि आई एम नॉट ईटिंग प्रसादम, प्रसाद इज ईटिंग मी। महाराज ऐसे ह्यूमरसली बोलते रहते, वहां से आ जाता है। बोला आई एम नॉट ईटिंग प्रसादम, प्रसादम इज ईटिंग मी टुडे। ये क्या, ठीक है, तो ऐसे कुछ बोलते हैं महाराज। कोई पूछा सर, कोई पूछा हमारे बॉम्बे में एक डेंटिस्ट है, तो बोले कि आप क्या करते हैं महाराज को, महाराज ने उनको पूछा, तो बोले मैं डेंटिस्ट, बोला आप ट्रांसडेंटलिस्ट है। ऐसे करके ह्यूमरसली बहुत बोलते हमारा, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है। फिर वो दाल हम लोग दिए, दाल देखा, मैंने एक फ्लास्क में भर के रखा था, उसको बाटी में डाल के दे रहे थे, वो सारा दाल खाए और बहुत सारा राइस लिए, मैं तो सब खाए महाराज अच्छे से। फिर हम लोग ने बोला कि दही है, ये दही जो है मतलब ये गुरुदेव बहुत पसंद करते थे, आपके लिए हम लोग लाए हैं। वो तुरंत कहा हो रियली, गुरुदेव यूज्ड टू लाइक इट, के लेके खाए, दही खाए, संदेश खाए। वो संदेश हम लोग भीम सेन, मतलब बहुत फेमस है कलकत्ते में, श्याम बाजार में, भीमसेन नाम सुना है, करा नाम सुना, भीमसेन संदेश, भीमसेन मिठाई वाला, और श्याम बाजार में उस हम संदेश कैरी करके ले गए थे, मंगाए थे इधर से, हम लोग भीमसेन का संदेश ले रहे थे, ऑथेंटिक मतलब संदेश खाना है, तो वहां पहुंचे, बहुत सारी दुकान है मतलब, तो वो भीमसेन का संदेश वो भी खाए, वेरी नाइस। बात किए, हाँ, फिर बोले कि तुम लोग कैसे
कैसा है, अच्छा है कि नहीं, बहुत पर्सनल इंटरैक्शन। मतलब वो कुकिंग करने, मतलब ऐसा था कि हम लोग को 3 दिन कुकिंग करना है। तो महाराज जैसे एक ही बार समझ लीजिए भोजन लेते हैं अच्छा से प्रसाद। वो दिन मॉर्निंग में कुछ तो दूध पी लेते हैं, आफ्टरनून में 1-1:30 बजे खा लिए, और फिर शाम को कुछ ऐसा हल्का फुल्का सूप पे बस हो गया। हम टाइम में तो लोग कैसे रहते हैं, बाप रे, सो टफ। प्रसाद अब नहीं मिलेगा, अभी आफ्टरनून में 12 बजे तक फास्टिंग करना है, तो सोच सोच के टेंशन होता है ना। और पूरा फिस्ट पे ध्यान है, क्या क्या बन रहा है, कोई हमको बता दिया ये फिस्ट बनेगा, तब से मेरा माथा घूम रहा था फिस्ट। तो अभी मतलब फिर दूसरा दिन क्या हुआ, पहला दिन कुकिंग कर लिया हम लोग, अचानक से क्या होगा, मतलब दूसरे दिन महाराज को कोई आमंत्रण कर लिया उनके गॉड ब्रदर ने, नहीं लिए महाराज को सर। तीसरा दिन मैंने कुछ तो हुआ, तो 3 दिन में 1 दिन हमको चांस मिला अच्छा से कुकिंग करने का। तो हम लोग बातें कर रहे थे, मैं राधा कुमार को, मतलब खासकर मेरे को ये मन में बहुत दिन से था, मतलब जब भी महाराज को मतलब महाराज लोग आते हैं ना, तो ऑब्वियसली गुरुदेव को हम लोग तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मिस करते हैं। कुछ पर्सनल सेवा तो आप कर नहीं सकते किसी की, पर्सनल सेवा धीरे धीरे मतलब ऐसे समय चला जाता है, पर्सनल सेवा इतनी नहीं मिलती, कोई मीनियल सर्विस देना नहीं चाहता, अरे नहीं नहीं आप प्रचार कीजिए, तो बहुत आप लोग प्रचार कीजिए, मीनियल सेवा कैसे करेंगे। तो एक बार मैं बोला, मतलब मैं एक बहुत बीमार, 2012 में यात्रा हुई थी ना महाराज की, 2012 है ना, मायापुर में यात्रा हुई थी 2012 में। तो समय बीमार था मैं थोड़ा, मैं मायापुर में था, तो मैंने बच्चन को बोला कुछ तो, महाराज पास में, मैं 30 नंबर रूम में रहता था, मैंने बोला थोड़ा कुछ तो सेवा दीजिए। बोला ठीक है, कपड़ा है महाराज का, बोला कपड़ा तो मैं धो सकूंगा, ठीक है तुम आ जाना। दूसरे दिन वो बुला है, कपड़ा धोने का मतलब इतना पर्टिकुलर है, आप कपड़ा धोए जैसे हम लोग धो लिए सब करके सुखा दे, बोला ऐसे नहीं चलेगा, तुम धोए उसको डीप करने का, अच्छा से उसको डीप करके हल्का से रिंस करके रोड डाल देने का, वो पानी अपने आप सूखे। उनका सबसे गंजी धो के जैसे मैं बोला, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वो गंजी ऐसे निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है उसका, ऐसा नीचे निकल जाता है, वैसा नहीं चलेगा, तो झाड़ के सब उसको लटका दो, वो सूख जाएगा, तो वो उसको ऐसा ऐसा पहनते ना, गंजी कैसा हो जाता है, मेरा टोपी अभी ऐसा हो गया है एक भक्त की कृपा से, तो वो बस तो वैसा ऐसा सब फ्लाइंग होता है, वैसा नहीं चाहिए, मतलब वैसे होना चाहिए आपने, उनका गंजी वैसे, मतलब बाप रे इतना पर्टिकुलर, मतलब तो प्रसाद लिए, मतलब मैं सोचा पसंद आया कि नहीं, अरे महाराज को हम लोग को इंकरेज करने के लिए महाराज ऐसे बुलाया। महाराज ने बोला था आपका संग मिलेगा मायापुर में, आइए मायापुर में आपका संग मिलेगा। हम लोग बोले क्या हमारा संग मिलेगा, हम लोग है ना नादा, हम लोग महाराज अपना संग देने के लिए बुला रहे हैं। तो कहने का तो देखो बहुत इच्छा थी कि क्या कुछ पर्सनल सेवा कर पाएंगे क्या, तो महाराज सच में जान गए इस बात को। जो गुरु होते हैं उस अपने शिष्य के हृदय की भावना को समझ लेते हैं, और एक दिन वो अवसर मिला, बहुत प्रेम से बात किया, पर्सनल इंटरेक्शन करके, केवल हम लोग रूम में थे, महाराज प्रेम से खाए, बात किए, अब बहुत स्नेह किया महाराज। तो वो अवसर प्रदान किया कि ठीक है तुम लोग को सेवा करनी है, तुम लोग सेवा करो, आओ डू दिस सेवा, यू कम ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू डोंट हैव टू मिस एनीथिंग। और जब भी महाराज आते कलकत्ता में, हम लोग की यही सेवा रहती है, मतलब हनुमान को कुकिंग करते हैं और हम लोग सर्विंग करते, फिर बैठ के मैं उनको असिस्ट करता हूँ, फिर हम लोग जाके मतलब महाराज सर्विंग करें, और वो बहुत पर्सनल होता है, वो बहुत ही पर्सनल होता है। तो ये अवसर हमेशा उन्होंने प्रदान किया। कई सारी और घटना है, मगर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे भक्त लोग बोलने वाले हैं। तो आज के इस शुभ तिथि में मैं यही महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि
मुझे से नादान, जैसे भी परिस्थिति जो भी हो, मेरे को सदा अपने चरणों का आश्रय दे के रखे। हमारा इस अज्ञान व्यक्ति को मतलब कोई भी कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मैं उनके शब्दों में उनके इस व्यास पूजा तिथि पे क्षमा प्रार्थी होके याचना करता हूँ कि सदा मैं प्रभुपाद के इस मिशन को निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूं। हरे कृष्ण। पूज्यपाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज व्यास तिथि महामहोत्सव की जय। हरि बोल प्रमाण। Hare Krishna. We thank His Grace Vallabh Chaitanya Prabhu. Now we request Chaitanya Madhav Prabhu to come forward and give glorification of Maharaj. हरे कृष्ण। ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। How much time? 10 minutes. हरे कृष्ण। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको। आपने मुझे थोड़ा सा मौका दिया गुरु महाराज के बारे में बताने के लिए। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। मेरी खुद की कोई भी योग्यता नहीं है महाराज जी के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वो इतने ही महान व्यक्ति हैं, इतने महान संत पुरुष हैं कि उनके हम जैसे जो पतित आत्मा है मेरे जैसे स्पेशली, वो अगर उनके बारे में ध्यान करते हैं, उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो हमारा खुद का बहुत शुद्धिकरण होता है। उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, इतने सारे महान महान गुण हैं जो दर्शाता है कि आध्यात्मिक जगत है या आध्यात्मिक व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं। तो मैं कुछ उनके एस्पेक्ट्स को प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करूंगा। सबसे पहले अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। हमको अगर किसी को समझना है तो हमको भी उस स्तर में आना पड़ता है, तब हम उनकी चेतना को समझ पाते हैं। उसके पहले बहुत मुश्किल है। तो मेरी जो सीमित चेतना है उसमें जो इतने महान व्यक्ति श्री राधानाथ स्वामी महाराज, उनके बारे में समझने की बहुत ही कम क्षमता है। कभी जो भी टूटी शब्दों से मैं प्रयास करूंगा उनका गुणगान करने के लिए। तो महाराज जैसे हम देखते हैं कि हमको कोई भी कीमती चीज पाने के लिए कुछ रकम, कुछ धन या कुछ ऐसा हमको कुछ खोना पड़ता है। तो उसी तरह से हम जब अपनी दीक्षा के लिए गए थे पिछले साल 2019 में, मैंने देखा बहुत सारे परीक्षाएं आए। पहले तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, कोई ठीक ठाक नहीं था, दीक्षा होगी कि नहीं होगी, वो डुअल माइंड से गए थे।
फिर उसके बाद वहां जाने के बाद बहुत सारे परीक्षा हुए, रिटन परीक्षा नहीं या इंटरव्यू भी नहीं, परिस्थिति की परीक्षा। जब जिस दिन इनिशिएशन था उस दिन सुबह हमारा पानी, जो फ्लैट में जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ का पानी खत्म हो गया और टाइम पे पहुंचना था। इनिशिएशन में कोई क्लास तो नहीं था कि चलो लेट हो गया तो कोई बात नहीं, तो पानी खत्म हो गई। फिर पानी के लिए किसको बोले, आसपास कोई नहीं है। तो ऐसा एक अलग जगह में एकोमोडेशन दिए थे, मैं था और एक भक्त थे, हम दोनों लोग ट्रेन चले गए। तो बहुत परेशान हो गए। फिर बहुत कुछ कोशिश करके वो मैकेनिक को बुलाए, पानी आया, पानी से जैसे तैसे नहा के बाहर निकले, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अभी लेट हो रहा है, मीटिंग है, का एड्रेस होने वाला है और सब प्रोसेस चालू होने वाला है, लेकिन वहाँ पे बहुत लेट हो रहा है। तो हम प्रार्थना किए, बहुत वहाँ पे 1 घंटा करीब उनको खड़ा रहना पड़ा, फिर भी कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तो हम प्रार्थना कर रहे थे कि कब कैसे पहुंचेंगे, और वहां से 5 किलोमीटर दूर है, पैदल गए तो पता नहीं, और रास्ता भी नहीं मालूम था रास्ता। तो हम लोग ऐसे प्रार्थना करने लगे, तो अचानक एक भक्त गाड़ी लेके जा रहे थे उसी तरह, तो उनके गाड़ी में हम लोग बैठे और फिर वहां पे पहुंचे। ये जाके तो बाद में फिर और भी कुछ कुछ परेशानियां आई, कुछ डॉक्यूमेंट से था नहीं था उनके पास। तो बट अल्टीमेटली मैंने देखा कि गुरु महाराज दीक्षा देने के पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। बिना परीक्षा के हमारे जीवन में कोई भी अच्छी चीज नहीं मिल सकती। तो फाइनली दीक्षा हुआ, महाराज ने वो ग्रहण किया और मैं आजीवन आभारी हूँ हमेशा महाराज के चरणों में कुछ छोटी मोटी सेवा कर सकूं, इसके लिए हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी को, महाराज जी के जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, तो बहुत सारे हम सबको लगता है कि महाराज हमको अगर कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे तो कितना अच्छा रहेगा, कितना सुंदर हम फील करेंगे कि महाराज ने मुझे कुछ पर्सनली बोला है ये तुमको करना है। तो एक वक्त ही उस चेतना से, उसी इच्छा से वो महाराज जी के पास गए, महाराज मैं बहुत गलतियां करता हूँ, आप मुझे कुछ करेक्शन दीजिए और आप मुझे बताइए कि मैं क्या, मुझे जीवन में कैसे अपने आगे बढ़ना चाहिए। महाराज उनको सिंपल ऐसे बताया कि देखो, मैं जो अपने लेक्चर्स में जो भी मैं कथाएं करता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ भक्तों के लिए, वो सब मेरा हर एक व्यक्ति को, हर एक शिष्य है या कोई और भक्त है, तो मेरा पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। और अगर आप उस तरह से लेंगे तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। और आप अगर कोशिश करेंगे कि आप मेरे पास आकर मुझसे पूछें कि आपके लिए क्या आदेश है, मैंने ऑलरेडी बताया है, आप मेरे जो लेक्चर्स है वो अच्छी तरह से सुनिए, आपको सब कुछ पता चलेगा, आपको सब रिवील होगा और आपको क्या करना है जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब आपको पता चलेगा। फिर बाद में और एक बार एक प्रभु जी, पृथ्वी हरि प्रभु, वो महाराज जी को एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका शोषण किया है, आपको एक्सप्लॉइट किया है, बहुत सारे डिफिकल्टीज आए हैं आपके सुपीरियर्स इक्वल्स की तरफ से, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता आपके जीवन में? हमने देखा आपको, आप कभी गुस्सा ही नहीं होते। तो महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर दिया। महाराज बताया कि हम सब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं विनम्र हो जाऊं, मैं ऋणात अपि सुनिचेना जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो शिक्षा है महाप्रभु का, उसको मैं अपनाऊं अपने जीवन में। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमको करेक्शन मिलता है, हमको कोई अगर चेस्टाइज करता है, तब हम गुस्सा हो जाते हैं, हमको लगता है हमारा अपमान हो रहा है। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। रैदर हमको, मैं ऐसा सोचता हूँ महाराज कहते हैं कि
ये जो व्यक्ति है ये मुझे सहिष्णु बना रहा है और मुझे टॉलरेंट बना रहा है और मुझे आतुर बना रहा है, तो मुझे ये कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो मुझे उसको ग्रहण करना चाहिए। और इस हिसाब से ये मेरे गुरु हो गए, तो गुरु को कैसे मैं गुस्सा कर सकता हूँ जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं। और फिर पता है कि इस तरह से हम उनके, और ये जो भी हमको मिलता है ये हमारी या तो प्रार्थना है या फिर हमारा कर्मा है। तो हम क्यों दूसरे को ब्लेम करेंगे, अपने खुद के प्रार्थना, हमने ही प्रार्थना किया, हमने वो कर्मा किया, हमको वो रिएक्शन मिल रहा है, हमको वो रिस्पांस उत्तर मिल रहा है, तो फिर हमको उसमें गुस्सा होने का या फ्रस्ट्रेट होने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से महाराज ने बताया, इसको पालन करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमको उसको पालन करने में, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से वो हो सकता है। और महाराज जी के बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत सारे सुंदर, जैसे महाराज किसी कोई भी उनके संस्पर्श में आता है वो उनको कंफर्टेबल बना देते हैं। जैसे एक बार रथ यात्रा हुआ था, तो रथ यात्रा में बहुत जल्दी प्रसाद खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों को प्रसाद नहीं मिला। तो जब रथ यात्रा का फीडबैक मीटिंग हुआ, तो फीडबैक मीटिंग में सब लोग चिंतित थे, अरे ये कारण हो गया, इसलिए हमने लिखा था सम्चुअस प्रसाद मिलेगा सबको, लेकिन प्रसाद हमें नहीं मिला, बहुत गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से वो विलाप कर रहे थे, तो उसमें महाराज आके उधर बैठ गए मीटिंग, और महाराज ने बताया कि डोंट वरी, यू हैव डन योर पार्ट, चलो सम्चुअस आपने लिखा था, सम्चुअस में से चुअस निकाल दो और सब प्रसाद, थोड़ा प्रसाद सबको मिला ना, तो सब प्रसाद कर दो, अगली बार हम देखेंगे। तो सबको बहुत आराम से कर देते, सबको कंफर्टेबल कर देते महाराज। तो उसी तरह से बहुत महाराज का बहुत ह्यूमरस है, बहुत विटी है, तो बता रहे थे। तो एक माता जी आकर, बहुत एल्डरली माता जी थी, आकर महाराज को पूछते, महाराज वो बहुत नई माता जी थी, महाराज आप बता सकते मेरा उम्र कितना है? तो स्पेशल माता जी के लिए बताना बहुत डिफिकल्ट होगा, आप अगर ज्यादा बता दीजिएगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो महाराज सोचे क्या, तो महाराज बहुत ही अच्छा उत्तर दिए। महाराज बोले, आई फॉर मी आई डोंट नो योर एज, मैं आपकी उम्र मैं पता नहीं, लेकिन मुझे आपको देखने से लग रहा है कि आप 16 साल की उम्र की एक युवा लड़की है। तो वो बहुत खुश हो गए, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच, चले गए। तो महाराज बहुत ऐसे उम्र से मिट्टी है। एक बार और क्या हुआ, एक कॉफी स्टारबक्स करके एक कॉफी वाला है, तो उसने वेस्ट में महाराज को इनवाइट किया, अपना ये नया स्टोर खोला था उसने, रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे इनवाइट किया। तो महाराज गए, और तो कॉफी बाकी लोग नहीं पीते, लेकिन फिर भी इनवाइट किया इतना प्रेम से, तो महाराज चले गए। तो इनॉग्रेट कर दिए, सब पिता उता कट गया। फिर वो व्यक्ति को इच्छा था कि पहला जो कप ऑफ कॉफी है वो महाराज को पिलाए। तो महाराज ने, महाराज क्या करे, महाराज बहुत प्रार्थना किए अंदर अंदर, और उनको वो बोले कि देखिए, बहुत सुंदर ऐसे बताया, देखिए मैंने एक व्रत लिया है कि मैं ये कॉफी अभी नहीं पी सकता, व्रत लिया है, इसके लिए मैं अभी पी नहीं सकता, लेकिन जब भी मैं कॉफी पीऊंगा अपने जीवन में, मैं केवल स्टारबक्स का ही कॉफी पीऊंगा। तो इस तरह से वो इतना खुश हो गया व्यक्ति कि अरे, तो इस तरह से महाराज बहुत ही पर्सनल, बहुत ही विटी है, बहुत ही मर्ज भी है, और किसी को भी वो
हृदय दुखाना नहीं चाहते, सबको आनंदित करना चाहते। हम लोग वहाँ पे होते तो हम बोलते नहीं ये हमारा रेगुलेट प्रिंसिपल है, हम कॉफी वॉफी नहीं पीते, तो हम हमारे ईगो में आ जाते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम महान हैं, बट महाराज की केस में ऐसा नहीं। तो रिसेंटली महाराज कथा कर रहे थे कलकत्ता के भक्तों के लिए, तो एंड में महाराज भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया कि कैसे वो इतना आतुर थे, इतने ईगर थे कि कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी को जो इच्छा है वो पूर्ण होए। कलकत्ता में 10 सेंटर हुए, कलकत्ता में बहुत सुंदर गॉर्जियस एक मंदिर बने प्रभुपाद जी का जन्म स्थान पे, और कलकत्ता सही मायने में मायापुर के लिए गेटवे बने, ऐसी इच्छा प्रभुपाद जी की थी। और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमसे बिछड़ गए, वो चले गए। प्रभुपाद जी का बुलावा आ गया और वो भगवत धाम में उनके पास चले गए। तो इस तरह से, लेकिन अभी भक्तिचारू स्वामी महाराज की प्रतिनिधि होकर हम सबका ये दायित्व है कि प्रभुपाद जी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना है कलकत्ता में। तो श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज चाहते थे कि यहाँ पे 10 सेंटर हुए और यहाँ पे प्रभुपाद जी के मेमोरी में एक बहुत सुंदर मेमोरियल टेम्पल हुए। तो ये सब अभी उनके प्रतिनिधियों या हम सबके ऊपर ये भार है। महाराज बता रहे थे कि हम सब को मिलके इस स्वप्न को पूरा करना है, तो फिर हमारा जन्म कुछ सार्थक हो पाए। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि आज के दिन महाराज जी का व्यास पूजा है, जन्म दिवस है, तो हम कुछ अपने जो भी छोटी मोटी एंडेवर पूरा अपना जीवन डाल के कुछ एंडेवर करके हम गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को पालन कर पाए, अपने जीवन को सुधार कर पाए। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं वो अपने कथाओं में और आदेश पर्सनल इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं उनको हम पूर्ण कर पाए। तो यही प्रार्थना करूंगा और यहाँ पे इस होली में राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा की, इस होली में राधानाथ स्वामी महाराज की। Hare Krishna. We thank His Grace Chaitanya Madhav Prabhu. Now we request His Grace Mathurapati Prabhu. Prabhuji, you are there? Hare Krishna, Mathurapati Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. So you can switch on your video. Yes, Prabhuji. So that. Just a minute. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu, you can speak. Hare Krishna. Om Agganat Mirandhassa Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Radhanath Swamy Niti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamy Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharina Nirvishesha Shunyavadi Saptadeshatarina. Moham Karoti Vachalam Pangalam Devatagiram Jatkipata Mahamandi Sri Guru Devatarina. Hare Krishna. So thank you, Prabhuji, for giving me this opportunity to speak something about Maharaj. Though we are not at all qualified. Actually, few days back, I was watching a video where one celebrity, one European celebrity, Maharaj was entering into a building, and that celebrity, I think Mr. Russell Brand. So he was standing there, and Maharaj, as usual, with his folded hand, he was looking at everybody individually and smiling. And when Maharaj
was coming in front of this person. So he suddenly said, actually, there is no individuality. All individuality is an illusion. So I got shocked that somebody can speak to Maharaj in such a way because he's a guru of the Bhakti tradition, and in Bhakti, individuality is the foundation. So I was thinking how Maharaj will react to this person. But it was amazing. Actually, Maharaj is so deep in his loving reciprocation. Maharaj did not say even a single word. Maharaj continued to smile and just brought him to his shoulder and embraced him tightly. So I was feeling that Maharaj gives love so much priority in his life, as he continually preaches that being an instrument of compassion of Lord, and Maharaj is an embodiment of that love and compassion. So because in our life we fail to do so, all the petty issues, all the issues become so big in front of us. But Maharaj is sitting on a mountaintop, and when one sits on a mountaintop, the views he can see everything clear, crystal clear, what is happening below. And because he is sitting on the mountaintop, naturally, specifically the difference, but because Maharaj is, sees from the top the small issues that create disharmony amongst us, all being the children of Krishna. Actually, we all are being the children of Krishna, and there are so many disharmony amongst us. Because, and Maharaj sees it from such a view, from such an angle, every disharmony disappears. Only Maharaj sees from the soul's perspective. This is a lost children of Krishna. How can I take him to Krishna? So that is amazing. And Maharaj is always trying to be an embodiment of love in all his reciprocation. Though I never had any opportunity to personally reciprocate with him, but I can understand by seeing at him from a distance. And one time I remember Acharya Prabhu was telling, once he approached Maharaj and requested him, Maharaj, kindly give me some personal instruction. And Maharaj, Acharya Prabhu said, just told him, love devotees. So these two words are so simple words, so common words. Every day we use it with such words, but these are actually the foundation of our existence. If there is no love amongst devotees, because of our conditioning, we try to see so many fault in each of us, and because we are not perfect, and Maharaj just simply said love devotees, and this can be a mission of life for each of one of us. Whatever is our limitations, whatever is our conditioning, if we can follow this instruction of Maharaj, then for us our life will be perfect, and for ISKCON it will be a very good future. Otherwise there will be so much differences amongst devotees. So Maharaj knows the essence of everything. He just picks up the essence. He will never go to the big philosophical discussion, or in his lecture definitely he will explain everything in totality, because our view is partial. Maharaj exposes each and everything in totality. So this is a very real foundation for our spiritual life, that we should love devotees. And if I can imbibe that in my life, then I will consider my life to be perfect. And Maharaj's expression of gratitude, actually, it is unimaginable. Once I heard from Kaninath Shala Prabhu that in Chopati temple, there are some wooden frame structure, where the sound boxes used to kept, and the classes used to happen, and those boxes used to support the speakers, sound systems. And but later, when the hall was renovated, those wooden structures were no more needed. So the authority decided to discard them, to throw them away, because they are useless now. And even those boxes were removed and they were taken to the truck to throw it out somewhere. And Maharaj, in that time, when he heard this, he said, no. How can we throw these wooden structures? They have served us so many years. So Maharaj's compassion extends not only to all the living beings, his compassion extends to the matter also, dead matter. So that is really shocking for me, because I never imagined somebody can think from such an angle. And because, of course, it is our limitation that we see dead matter, but Maharaj doesn't see matters as dead matters. He sees everything in related to Krishna. And hearing from Maharaj is always a guideline.
for our life. But unfortunately, we cannot follow it, and we succumb to the propensities of our animal propensities. Once Maharaj said in a lecture that you cannot say ki you cannot do anything because you are not the doer. So because if you cannot, when you do something and you say I am not the doer, it is all Krishna's, then if you have not done anything, then how can you say I cannot do anything? If you are not the doer, how can you be the not doer of anything? So that is another shock for me, because I cannot escape from anything now, because if somebody says me to do anything, how can I say I cannot do it? So Maharaj simply Maharaj takes us to the service of Krishna in totality. He will not allow us to go away from in any chance. So this is the greatness of great souls, that they sees from the very depth of our soul, and they tries to bring us to the right path so that our life becomes successful. But actually, we are totally in that light. Even his compassion extended to the dead matter. When I introspect on my activities in that light, so I really feel I should not call myself a disciple of him, because there is it is totally incompatible. I have known not even as the insignificant part of his portion. So, but his causeless mercy is my only hope. Otherwise, how could he agree to accept me as his in his shelter? And in spite of my fallen character and my selfish motives and selfish agendas, my only wish, pray that may Maharaj continue to live in a healthy life and active life, and may he continue to bring thousands, hundreds and thousands of souls to the feet of Krishna. So thank you very much. All glories to His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Mathura. So now we request Rangaraj Krishna Prabhu, to give his offering. Next, Sabita Basu Mataji can be ready after this. Just wait, Rangaraj Prabhu. সঞ্জয় একটু তোমার ফোনটা আমাকে দাও না, আমি এটা একটু ইয়ে করে পড়তে হবে। ক্যামেরাটা একটু বার করে দাও। আর ধরো না তুমি ধরো না। Yes, Rangaraj Prabhu. तो आपका वीडियो ऑन करेंगे क्या? Srimati Radhanath Swami of Radhanath. So as far as my devotional conditioning is there, I am at a Shraddha stage. But what I found that even Maharaj inspires us and takes care of everyone. Be it very advanced stage or someone is it's very beginning stage, Maharaj do really take care of everyone. I think it was in 2008 and 2009, everyone was going for Vyas Puja in Mumbai. But when I asked that whether I can come or not, and at that time I was in college in Calcutta studying, so they told that you are not allowed to go. So I had one locker room in Bhaktivedanta Ashram in Calcutta temple. So I used to never clean that locker. So that locker was with me for many months, but I never used to clean. But somehow one devotee was cleaning his locker, so somehow just one day before I in that locker, I found 2 photos of Radhanath Maharaj, and also I found a book of on the appearance day of His Holiness Radhanath Maharaj. So I thought that Maharaj is taking care of me, and somehow I feel that I was special, but this is not the case. I heard one lecture in which one devotee was there who used to listen every day around 2 hours of Radhanath Maharaj lecture. So he was not initiated also. So he told. So one day, as he was listening a lecture, he was thinking whether Maharaj knows me or not, I don't know. So as soon as this doubt crept in his heart, he thought maybe whenever if Maharaj takes my name, then I will think that he will know me. So as Maharaj was giving lecture, one Brijwasi came to ISKCON Chapati temple. So that was a very old recorded lecture, and that and then Maharaj said, so
this Brijwasi, whose name was same as the person who was listening his lecture, has come. Say Hari Bol 3 times. So he was thinking, Maharaj has told my name once. At least he should say at least 3 times. Then I will confirm that Maharaj knows me. So Maharaj told 3 times his name and told everyone to chant Hari Bol. So he got conviction that Maharaj knows everyone. So from this is my conviction. Maharaj knows everyone, and Maharaj also takes care of everyone, whether one is has not been initiated, or is at beginning stage, or at very advanced stage. So I just pray that he just take care of me, and may Lord Krishna give him a very good and nice health, so that we can have his association as long as Radhanath Maharaj wants. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Rangaraj Prabhu. So now we request Sabita Basumata ji to be ready. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes, can I start? Yes, Mataji. Achha. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, and all glories to His Holiness Radhanath Swamy Maharaj. Please accept my sincere pranam. Dear Maharaj, my first introduction to you was when I read your book, My Journey Home. I was amazed, I was shocked to know what difficulties you went through, how much troubles and tribulations you have tolerated, how much tapasya you have done and sacrificed just in search of truth. Ultimately, you reached your destination after reaching in India. Now, in the book, where as I read, every small incident you have narrated, you have given a deeper meaning to it, which is so applicable to us in our daily lives. But of course, it is difficult to implement. Now, after reading your book, I was very interested, and I wanted to see you personally, physically as such. So I asked one of the devotees in our congregation as to how have you seen him and how close have you seen him. So she explained to me by her interaction with Maharaj. But in my heart, I had my feeling that I want to see him actually. Let me see how, when I get the opportunity. So it so happened that I happened to go to US after maybe 2 months. And I was in in New York. And it so happened that the New York Rath Yatra was there. And in the Rath Yatra, I got an opportunity to see him in such close proximity. So you can see the how my interactions and how he responds, how he reciprocates like that. So I was so motivated, and I felt so much of gratitude when I saw him so closely. That was the first time I got to see him. After that, again, I think there was this Kartik Yatra, which was there at Mayapur. So again, I didn't attend the Yatra, of course, but I went there for a day. So again, that time again, I got to see him from a far distance, but I did get to see him again there. So whenever I see him, he is the epitome of humility. The way he stands, the way he talks, the facial expressions, he actually portrays humility and gratitude. That is what I feel. And I am today, Maharaj, is your birthday, and today is your birthday, and may I resolve that on this day I take a resolve that I abide by your instructions. Almost in all your lectures, you mentioned Trinadapi Sunichena Taroriva Savashnuna. But even after hearing it so many times, it is so difficult to implement this. It is so very difficult to implement this. Unless I seek your mercy, unless I have your mercy, I think this will be, it is a very tough task ahead. So I pray and I at your feet that you may shower your mercy on me, and may I be able to please you and please Srila Prabhupada and
also please Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hello, Hare Krishna. Most my children. Hare Krishna. Just wait, Mataji. Ah, yes. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. So next, Rohit Prabhu. तो आपका एक गड़बड़ है स्मॉल Swamy, Radhanath, Swamy, जय श्री कृष्ण कहते हैं प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौर हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा. I had the opportunity to see Maharaj in GEV, where many of the devotees went to meet Maharaj, and by the help of Amar Prabhu, I also met Maharaj there, and there I saw that how he was interacting and taking everyone in notice and meeting everyone. So it was a very special experience for me that how much he is concerned about each and everyone. I also got the opportunity to have his prasadam from Krishna and Prabhu. And I always hear his lecture about Mantikrit Maharaj, that he used to say that when he met Srila Prabhupada to complain that there is some racism. So there I actually knew Srila Prabhupada because the glorification of Prabhupada heard from Maharaj is very much inspiring, because we don't actually understand Prabhupada or Krishna or pure devotees unless it is glorified by another devotee. So there Srila Prabhupada said that to follow the principles of Bhagavad Gita, because he didn't do the company. He told that if you think that if you are affected by what ignorant devotees of mine said, told you, then how you are different from them means that if they are not following the principles of Bhagavad Gita, then you are also not following, because you are getting affected by the racism because of the bodily concept of life. So this really affects me, and always whenever I used to pray this, I always used to know Maharaj. These are the few interactions from him, and I hope that I always associate with him. I always be more and more inspired. And thank you, Maharaj, for whatever you have given me. This one is Swamy Maharaj ki Jai. Swamy Maharaj Das Puja ki Jai. Thank you very much, Prabhu. So now we request Vidit Prabhu to come and do this. Next, we request Arindam Prabhu, Arindam Datta Prabhu to be ready. Hare Krishna.
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नाम नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्नं शून्यवाद पश्चात् तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि पहली बार मैं महाराज जी के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ, वो भी हमारे कोविड के सिचुएशन के लिए अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया सब कुछ और टीवी स्क्रीन में, और डर लगता है ज्यादा क्या बताऊँ नहीं बताऊँ, तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, जो मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये जो स्टेटमेंट है महाराज खुद स्वयं बोलते हैं ये बात, वो जब किसी शुद्ध भक्त का गुणगान करते हैं अपने गुरु भाई का या कोई भी आचार्य का, तो वो ये कहते हैं कि शुद्ध भक्त का जो गुण है वो समुद्र की समान है, वो समुद्र से तुलना करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है उस समुद्र के हर बूंद को आपके सामने व्याख्या करना, उसका डिस्क्रिप्शन देना, तो मैं समुद्र से एक बूंद उठा के उसको थोड़ा सा आपके सामने उनके बारे में बोलने की कोशिश करूँ। तो उसी तरीके से मैं भी एक दो चीज में महाराज जी के बारे में बोलने का, गुणगान करने का ये जो मौका मिला उसका मैं लाभ उठाना चाहता हूँ और अपना हृदय शुद्ध करना चाहता हूँ। तो जैसे बहुत भक्त लोगों ने बताया है कि महाराज जी का एक महान गुण जो है वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो उसके ऊपर मुझे दो तीन इंस्टेंस याद आता है। जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन डिस्टेंस से, पास से तो नहीं, वो था हम्पी यात्रा में 2014 में मेरा भाग्य हुआ था, भाग्यशाली था मैं, बेंगलोर से मैं हम्पी गया था। तो तब वहां पे सब कीर्तन कर रहे थे, सब बैठे हुए थे कि महाराज जी आएंगे, सब वेलकम करेंगे और कथा होगा। तो सब वेट कर रहे कब आएंगे कब आएंगे। थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि वहां से पैदल चल के अंदर आना पड़ता है, वह गाड़ी का सफर नहीं था। तो अचानक से सब बोले कि महाराज आ गए और मैंने तो देखा ही नहीं उनको, बस चेहरा ऐसे फोटो में देखा था। तो दूर से देखा एक ऐसे सैफ्रॉन कलर के कपड़े में एक व्यक्ति वहां खड़े हैं और सब उधर देख रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छा ये शायद महाराज होंगे। फिर देखा कि वो खड़े थे, फिर वो गायब हो गए वहां से, वो नहीं दिख रहे। और फिर आसपास में देखा बाकी सब गायब हो गए, हजारों लोग गायब हो गए। तो असल में गायब नहीं हुए, महाराज वहां से सबको दंडवत प्रणाम किया उस हम्पी के पहाड़ के ऊपर से नीचे आने से पहले। और उसको देख के मतलब वो तुरंत मतलब पहले तो शिष्य को प्रणाम करना चाहिए, गुरु पहले ही प्रणाम कर रहे शिष्यों को, वो सम्मान व्यक्त कर रहे कि सबके हृदय में परमात्मा है, उसका सम्मान दे रहे। वो सेवक के रूप में गुरु अपने आप को प्रदर्शन कर रहे कि मैं आपका सेवक हूँ, गुरु का आधा एक रोल निभा रहा हूं मैं। तो मुझे भी लगा कि नहीं, अभी मुझे भी प्रणाम करना चाहिए, मैं अकेला बचा हुआ खड़ा हुआ हूँ, बाकी सब लेटे हुए हैं प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे उनका विनम्रता का वो एक छोटा सा एक प्रकाश देते हैं हमारे अंदर कि हमें उस चीज को कैसे अपनाना है। जो सभी भक्त इसी हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिखे हैं और चैतन्य महाप्रभु शास्त्र में बोले हैं त्रिनादपि सुनी जना, उसका एप्लीकेशन हमारा लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है। दूसरा चीज मुझे याद आ रहा है कि एक बार महाराज जी खुद बता रहे थे अपने लेक्चर में, एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी के लिए बहुत सारे भक्त अपने उनके व्यास पूजा में बहुत कुछ रेसिपी बना के लेके जाते हैं। कोई कुछ स्वीट बनाया, कोई कुछ दूसरा आइटम बनाया। तो वो तब वेस्ट वर्जीनिया में थे, न्यू वृंदावन टेम्पल में। तो वहां से कुछ भक्त लोग स्वीट लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो संदेश भिजवाते हैं वहां से, प्रभुपाद जी के लिए संदेश लेके जाते हैं।
तो वो कहते कि वो संदेश वहां एक भक्त था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन वहां एक और भक्त था जिन्होंने वो संदेश बनाया। तो ऐसे बोल के छोड़ दिए। तो सबको पता चला, कुछ कुछ जो महाराज जी को जानते हैं, वो संदेश जरूर महाराज जी ने बनाया होगा, लेकिन वो अपना नाम नहीं ले रहे। बोल रहे कि एक भक्त था जिन्होंने संदेश भेजा था प्रभुपाद जी। तो जो वो डिवोटी उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, ब्रज बिहारी प्रभु देसाई, तो वो पूछते हैं महाराज से कि जब रात में सोने जाते हैं कि महाराज वो जो भक्त जो संदेश बनाए थे बोल रहे थे, वो आप ही थे ना? तब महाराज बोलते कि नहीं, मैंने झूठ बोला, वो अभी तक भक्त नहीं हो पाए। ये सुन के मतलब पूरा हिल जाते हो, क्या बोल रहे थे? मतलब मैंने झूठ बोला कि वो अभी तक भक्त नहीं हो पाया अभी भी, लेकिन अपने आप को बोल रहे हो भक्त है। ये बोल रहे कि हाँ मैं ही था। वो सबके सामने नहीं बताया, तुमको बता रहा हूँ पर्सनल। मतलब ये इतना शुद्ध वर्णन एक हृदय से प्रकाश किया गया, ये चीज बहुत कमी हमें इस जगत में देखने को मिलता है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त के हृदय में ही ऐसा भावना चेतना रहती है। एक और बात ह्यूमिलिटी का जो प्रकाश को करते हैं। एक बार क्या होता है, एक प्रेरणा लेक्चर, मतलब एक लेक्चर देना होता है संडे क्लास में। तो महाराज जी का तबीयत बहुत डाउन रहता है, बहुत खराब रहता है, मतलब बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे ऐसा अवस्था है। हम लोग का तो थोड़ा कुछ होने से लेट जाते हैं, लेकिन महाराज लोग उठ नहीं पा रहे, मतलब इस शरीर का अवस्था बहुत ही खराब है। ये आत्मा है उसके अंदर, शरीर एकदम बहुत सिचुएशन बहुत खराब है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो कंफर्म करते हैं नहीं मैं लेक्चर दूंगा, और वो संडे क्लास में आते हैं और 2-3 घंटे का लेक्चर देते हैं, और सब उनका धन्यवाद करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हम लोग तो मतलब सोच रहे थे कौन इस कथा करेंगे, आप अगर नहीं आए। तब महाराज एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैं आप लोगों को खुश करने के लिए लाखों करोड़ों बार मेरा अपना जान में दे सकता हूं। आप लोगों को एक दिन खुश करने के लिए मैं लाखों बार मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं वैष्णवों का संपद हूं। मैं आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द वैष्णवस। आप जैसे मेरा यूज करना चाहते हैं, मैं उसी तरीके से अपने आप को आपके सेवा में यूज कर रहा हूं। तो ये मतलब ऐसा बात हम लोग फिल्मी डायलॉग की तरह लगता है, और उस स्तर में पहुंचना ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। महाराज कहते हैं कि हमारा गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू बिकम बिनादपि सुनिचेना करोरपि सहिष्णुना मानिना मानना कीर्तन सदा। कृष्णा प्रेम कब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये भाव चेतना अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा चीज मुझे याद आ रहा है, लेकिन अभी समय नहीं होगा बोलने का। तो ये एक गुण जो विनम्रता, ह्यूमिलिटी, उसके ऊपर जो याद आया मैं बोलने की कोशिश किया। और एक और चीज जस्ट मैं शॉर्ट ऐड करूंगा उसमें, जब मैं जो बोल रहा था कि महाराज से मेरा फर्स्ट जो देखा, मैं महाराज दंडवत प्रणाम किए और वहां से मैं उनका दर्शन किया, उससे पहले मुझे उनका बुक दिया गया था, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अमेरिकन स्वामी जर्नी होम। लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं था, क्योंकि पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, पढ़ाई लिखाई मेरा जमता नहीं था, कभी मेरे जिंदगी में अच्छे से पढ़ा नहीं, कैसे कैसे पास हो गया और अच्छा नंबर भी आ जाता था, सब कुछ मिल गया मुझे बिना पढ़े, भगवान का कृपा। तो इसलिए बुक्स पढ़ने का मेरे पहले से इंटरेस्ट नहीं था, स्टोरी बुक्स नॉवेल्स कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। और इस्कॉन में आने के बाद तो बुक रीडिंग तो और परेशान। तो लेकिन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में कुछ कुछ पढ़ लेता हूं अभी भी, वैष्णव लोग मुझे खींच तान के बिठा देते हैं तो पढ़ना हो जाता है। तो वो बुक किताब मैंने बैग के अंदर घुसा के रख दिया, तो उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन एक भक्त के कृपा से एक शुद्ध भक्त मिलते हैं, जैसे शुद्ध भक्त कृपा से कृष्ण मिलते हैं, तो शुद्ध भक्त को के पास पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे भक्त लगे रहते हैं हमारे पीछे।
जो हमें मदद कर करके उस वक्त तक पहुंचाते हैं। तो ये गुरु का व्यवस्था होता है वो शिष्य को अपने पास लाने का। तो वो भक्त बेंगलोर में मुझे क्या किया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं है, तुम्हें एक गुरु तो चूज करना चाहिए अपने जीवन में। गुरु के बिना तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुम एक काम करो, ये महाराज जी का तुम लेक्चर सुनो। तो दे दिया, मैं तो खाली बैठा रहता था, वर्क फ्रॉम होम था, रूम पे ही पढ़ा रहता था, वॉइस था, अच्छा सिस्टम था। तो वो मुझे वो लेक्चर दे दिए, कुछ कुछ लेक्चर दे दिए। तो मैं जब सुनता था मतलब बहुत अच्छा लगता था लेक्चर सुन के। मैं नोट्स बनाता था, सब आदत अभी छूट गया है, अभी तो खाली सुनता हूँ, नोट्स बनाने का समय नहीं मिलता। नोट्स बना के जब सुनते थे, बाप रे, मतलब मजा आ जाता था, ऐसा लगता था कोई मुझे घुमा रहा है दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, यहाँ से वहां से वहां, ये लीला हुआ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता था। तो सुन के वो संबंध बनता है धीरे धीरे, वो मैंने फील किया कि देख के बात करके जितना संबंध हम बना सकते हैं, उससे ज्यादा उस व्यक्ति से अगर हम वो जो शुद्ध रूप से वो भगवत कथा करते हैं और उसको अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का कोशिश करेंगे और उसको पालन करने का कोशिश करेंगे, उससे हमारा उस व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ सकता है। तो संबंध तो मेरा जुड़ा नहीं महाराज जी से, लेकिन कुछ कुछ उनका कृपा है कि मैं अभी तक कोशिश कर पा रहा हूँ और वैष्णवों के संग में रह पा रहा हूँ। तो ये मेरा प्रार्थना रहेगा आज के दिन की, मैं उनका लेक्चर हर रोज सुन सकूं और सीरियस हो सकूं कृष्ण भवनामृत में, और सिंसियर होकर उसको पालन कर सकूं, वैष्णवों का सेवा कर सकूं, और स्पेशली हरि नाम में ध्यान पूर्वक जप कर सकूं। जो महाराज बार बार इस चीज को बोलते हैं कि चैंटिंग द होली नेम इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ईच डिवोटीज लाइफ। नाम के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा, महाराज क्लियरली बोल देते हैं। और एक बार एक लेक्चर में बोले कि जो नाम जितना जल्दी खत्म करेगा वो लाइफ में वो जादू देखेगा, वो जादू देख सकता है लाइफ में, जादू कर भी सकता है, उसके लाइफ में जादू होता रहेगा, मैजिक। यू विल डेफिनेटली सी मैजिक इन योर लाइफ इफ यू कंप्लीट योर राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जो मेरे से नहीं होता है, छूट जाता है। तो यही मैं प्रार्थना करूंगा कि उनका कृपा रहेगा तो ये संभव है, उनका कृपा रहेगा तो इतना स्वाद मिल जाएगा नाम में कि नाम छोड़ने का मन नहीं करेगा। और कृपा नहीं रहेगा तो एक हरे कृष्ण बोलने में ही मुंह थक जाएगा, साले सो जाओ। तो सब कृपा ही कारण है, महाराज बोल रहे थे मर्सी इज द कॉज, हम कुछ कारण नहीं है, हमारा कोई क्षमता नहीं। तो यही कृपा का मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज के चरणों में, उनका कृपा रहेगा तो मैं उनका कुछ सेवा कर पाऊंगा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you, Birit Prabhu. So we request Arindam Prabhu to switch on the video and he can give his offering. Prabhu, actually there are many devotees waiting. So earlier we had small list, like now devotees have added. So we request the offering can be kept for 3 minutes. Okay, Prabhu, thank you. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधाकृष्ण इति नाम्ने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री श्री गुरु महाराज की जय। Actually, I first I was chanting from my school life. Then, but I was not satisfied in chanting or things. I was always feeling unsatisfied. Later, when I came to know the process how to chant written by Maharaj, then I was whenever I try to follow the process, only then I feel satisfied in chanting or good in chanting. So in this way, first I came in contact with Maharaj through his writings, and later gradually I
started learning many courses, and through Radheshyam Pro, Maharaj's representative. And in this way, I feel more conviction in devotional life or philosophy. In this way, I get more attracted to Maharaj, and mm, uh, this way I took Maharaj in my heart, and later Maharaj personally arranged everything, and once Korna Sindhu Nitai Pro shared me a story that one girl in Chopati temple, that she was every day at her home in front of the picture of Maharaj, was praying for something. And when she went to temple, there she met Maharaj, and Maharaj asking her, why do you disturb me every day? Why do you ask for that thing every day? So Maharaj hears and everything of our prayers. So I was being inspired knowing that uh, thing by Kornashandra Pro. And so I am very fallen and insincere. So I will ask forgiveness for my insincerity, and I will pray to Maharaj representatives and Guru Maharaj that please uplift me and uh, help me become more sincere and keep me at your lotus feet. So this is my prayers, and please bless me, Maharaj, and to Maharaj's representatives also. Jai Srila Guru Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Thank you, Arnam Prabhu, for Hare Krishna. So we request now Devendra Prabhu to come and give his offering. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, my humble obeisances unto your lotus feet. So this 4-5 minutes is very less. That how much mercy, how much blessings I have got from you as of now. I am really so fallen, and I am not telling that for the cause of telling it, but really I mean it. But I have just got your Ahituki Kripa and Srila Prabhupada's Ahituki Kripa and other Vaishnavas Ahituki Kripa. So that's why I am trying to continue whatever little bhakti I am currently doing in my life. So with my limitation, I am trying to tell a couple of things. So if I start, really, I am from a very atheistic background, and I don't know how suddenly I am connected. I'm connected to ISKCON, and after that, devotees have given me the bunch of lectures of yours. That is the first bunch of lectures I have got, and just I started to learn just here. There is no pen and paper. Just I have just started to hear, and there was no expectation also that by hearing this, something will happen or some of the things will come in my life. But with little faith of all the devotees, I have started. So, but whenever I keep on hearing and hearing and hearing the things, I found out these are really magic, and so many logical conclusions you are drawing onto your lectures, and this really keeps on penetrating on my heart. And
it was really my swabha is one by one, little by little, it's getting changed. So it is said that even we cannot pay the debts of our biological father and mother, but here we are talking about a Shiksha Guru, where it is little written that Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. We cannot pay the debt even, and we really don't want to pay the debts, but the Ahetuk mercy is so much onto me, that's so that I am trying to carry in my life. So after 2 years, I have started to go to Kartik Jatra, and this is the first Kartik Jatra that was the most interesting for my life, and I have learned so many things with so many associations of the devotees, and this was a really memorable Kartik Jatra. And thank you, Maharaj, for doing this Kartik Jatra each and every year. And I missed this year Kartik Jatra so much. Really, it was a very much miss from my side that I missed this Kartik Jatra because it has not been happened. But really, I pray to the Lord that next year again we will go for a Kartik Jatra. So now, currently, Prabhupada's mission was to set up 10 temples in Kolkata. So I am currently associated with one of the temples registered, is from Downtown Modiji Temple. And currently I am seeing the struggles and all the devotees and all the sincerities they are making to fulfill the seal of Prabhupada's mission. And please bless me, Maharaj, so that I can give little by little whatever I can possible from my side, and to really achieve that mission of Srila Prabhupada. And really we want that a big temple in fewer days, a big temple will happen in Radhanath. But we need mercy, mercy and mercy. Just commit to the mercy from your side, and otherwise things will not happen. Really things will not happen. So I will end with one small thing. Prabhu karo daya deho more pado chaya. Thank you, Mother. Thank you. Keep showering your mercy and blessings unto me. Now we request Munmun Mataji to give our offering. Thank you, Devendra Prabhu. After this, we request Rishikesh Manna Prabhu to be ready for giving offering. And after Rishikesh Manna Prabhu, Ganesh Prabhu can give offering. Hare Krishna. সমস্ত গৌরভক্ত বৃন্দকে আমার শতকোটি প্রণাম। আমার গুরুদেবের চরণে, আমার শ্রী প্রভুপাদ গুরুদেবের চরণে শতকোটি প্রণাম। আমার শিক্ষা গুরুদেবের চরণে শতকোটি প্রণাম। আজকে এই শুভ জন্মতিথিতে আমি আমার পরম পূজনীয় গুরুদেবের উদ্দেশ্যে একটি লেটারের আকারে আমি লিখেছি, সেটাই আমি পাঠ করতে চাই। Dear Gurudev, my humble obeisances unto your lotus feet. Today is very auspicious day for me, as today is your birthday. My crores of Dandavat pranam unto your lotus feet.
I really don't have anything to give to you on your birthday, as I am really a very, very fallen soul, and this is my real identity. I don't have any quality by which I can serve you and other worshippers. In this huge, dangerous pandemic situation, I desperately need your words. My real shelter is onto your lotus feet. I am really blessed and satisfied as well. But Maharaj, I am so fallen, so fallen. Please bless your Ahetiki Kripa onto me. Please bless me so that I can continue to take your shelter and work accordingly to your words until my last breath of my life. In Kolkata, Srila Prabhupada's wish was to create 10 temples, out of which I am being connected with ISKCON Damdam Motichio. I am seeing the sincerity in all devotees' eyes. I am also trying to help them in whatever very little seva I can do for the mission of Prabhupada. Please bless us so that we can create a very beautiful temple inside our heart and in ISKCON Damdam Motichio temple as well. Only with your blessings, only we can fulfill the dream of Srila Prabhupada. At last, in this very auspicious day, my prayers to Lord Radhanath is please make my Gurudev to live long, long, and long. Without him and his words, so many souls will be suffering in future. At last, please bless me to achieve supreme goal of life as directed by Srila Prabhupada. Thank you, Maharaj. Thank you and thank you. My entire life has been changed with your word. Last word to tell. Aha Prabhu Karo Daya Deho More Pado Chaya Ha Prabhu Karo Daya Deho More Pado Chaya. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you, Mataji. So now we request Rishikesh Manna Prabhu. Start here. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. So all glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj, His Holiness Radhanath Swamy Maharaj. So actually I am insignificant and I'm not eligible to talk, but for my purification I'm trying to speak one or two words. Actually my humble obeisances to Guru Maharaj lotus feet. So when I first met Guru Maharaj, at that time I was coming to the ISKCON movement. So I attended the Nityananda Trayodasi in 2016. So at that time Guru Maharaj was coming and everyone was giving Dandavat Pranam to Guru Maharaj, and I also gave at that time and I attended that program. So never I heard that kind of lecture that even when I chant, my mind gets distracted, goes here and there. But when I hear pastimes from Maharaj, my mind is fixed to absorb to that words and nectar. So when from that day onward, whenever I hear lecture pastimes from Maharaj, actually I'm fond of Maharaj's pastimes about our previous acharyas, Guru Gauranga or anything. So Maharaj is so pure that anything we hear from Maharaj is specially rectify us also. So in this year also during online Kartik Jatra virtual classes of Maharaj actually purify me very well, and I get again opportunity to join in the movement and from Maharaj's disciple like Kanai Natsala Prabhu, Amal Puran Prabhu, or Mathurapati Prabhu. They helped a lot for reviving my bhakti and all. So Maharaj has given us all that surroundings, all his loving disciples, nice temples. So Maharaj is inspirations only Damdam, ISKCON Damdam, and also that New Town Gosala that expanded, and Bhakti is also growing. So we are insignificant, but I pray to Maharaj so that
I can also be part of this movement, and by Maharaj's kripa, one day I can get initiation, because I am aspiring from Maharaj, and my prayers does not mean anything to Krishna Srila Prabhupada, but I pray for Guru Maharaj long life, so that he continuously gave us his Bani and Bapu association for our purification, because Maharaj is pure like Krishna, and he is our Guru Maharaj. So my humble obeisances and gratitude to Guru Maharaj, so that he bless me, so that I can become more sincere and serve his mission. Hare Krishna. All glories to Radhanath Swamy Maharaj. So now we request Ganesh Prabhu to give his offering. हरे कृष्ण प्रभु जी। Krishna Prabhu. नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामने। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशचारणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। Although I am insignificant to speak about the Maharaj, yet I will try to speak little for the pleasure of Guru and Gaurang. Mercy, in bhakti, we are completely dependent on the mercy of Guru and Lord. So, mercy of the Lord, भगवान की कृपा गुरु और शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम लोग को प्राप्त होता है। और many from the life of Maharaj, many lessons हम लोग सीखते हैं, जैसे कि हम लोग महाराज और हमारे भक्त बताते हैं कि 4 नियम पालन करना चाहिए, लेकिन ये महाराज के जीवन और बायोग्राफी में ही ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं कि महाराज को डायरेक्ट उनकी परिस्थितियाँ ही उनको 4 नियम फॉलो करने के लिए बताए हैं। तो सिमिलरली महाराज के जीवन से जितने भी हमारे टीचिंग्स स्क्रिप्चर्स में, और चाहे वो शिक्षाष्टकम हो और अन्य ग्रंथ हैं, महाराज के जीवन से ही हम देख पाते हैं अभी के टाइम में। और एक एग्जाम्पल भी ऐसा ही है जिसमें भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं गुरु और भक्तों के माध्यम से। और एक बार की बात है जब कार्तिक यात्रा थी मायापुर में, तो मेरे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, और उस टाइम मौसम भी बहुत ख़राब था। लास्ट टाइम का मायापुर यात्रा, कार्तिक यात्रा, तो उस टाइम में मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, टिकट भी नहीं था, लेकिन और मेरा अनविलिंगनेस था कि मैं मायापुर नहीं जाऊँ क्योंकि ये सब बहुत सारा इनकन्वीनियंस होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में आया कि नहीं, महाराज भी बहुत सारा इनकन्वीनियंस लेके मायापुर यात्रा में हम अपना एसोसिएशन देने के लिए आ रहे हैं, तो हमको ट्राई करना चाहिए वहाँ पहुँचने का, चाहे जैसे भी हो। इस तरह हम डिसाइड किए कि जनरल बोगी में जाके और मायापुर यात्रा को अटेंड करें और महाराज का एसोसिएशन लेने का कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह हम महाराज की यात्रा को अटेंड किए 2-3 दिन, और अल्टीमेटली उस यात्रा में महाराज का चरण छूकर प्रणाम करने का मौका मिला, और ये बहुत ही हार्ट फीलिंग एक्सपीरियंस था। तो इससे इस तरह का और भी बहुत सारे अदर भक्तों की भी लाइफ में हम सुनते हैं महाराज के ऑफरिंग्स के टाइम में। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज का पद छाया हमें हमेशा प्राप्त हो, और महाराज भक्ति में आगे बढ़ने के लिए महाराज की कृपा पर ही पूर्ण रूप से हम लोग आश्रित हैं। हरे कृष्ण। Thank you very much, Prabhu. So now we request Jaideep Prabhu to give his offering. Next, after Jaideep Prabhu, Sangeet Biswas Mataji can be ready for the offering.
Hare Krishna. Om Vishnu Padaya, Krishna Prishaya, Sri Radhanath Swamy, Om Vishnu Padaya, Krishna Prishaya, Sri Radhanath Swamy, Namaste Saraswati Devi, Gaur Vichari, Nirvish Chandramani, Asakesh. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Radhanath Nam. Actually, I'm a bit in loss of words today. Speaking about you, I'm really insignificant. I'm not really qualified to speak on Maharaj, but I'll try to summarize what I've heard from your lectures, Maharaj. What I've learned from you, what I've seen, and what I've heard from your senior disciples. You have dedicated your life, your every breath for the service of Srila Prabhupada. And I also aspire to do the same for your mission, for Srila Prabhupada, for the desires of every senior authorities in my life. Although I'm not very sincere, Maharaj, but in every step you have been reciprocating with my prayers. Like whenever I'm in a dilemma, whenever there is some doubts, I get the answers to your lectures. So it is something like you are answering to me, you are there with me, I'm not alone. And this is something which really gives hope and courage for me to move ahead in life. So although I'm not very sincerely following the vows, I'm not sincerely able to keep on to my expectations, but still you are reciprocating. So I'm really grateful on this. So even though I'm far from being eligible to call an aspiring devotee or aspiring disciple, but what I've heard from one of your lectures, you said a disciple can either be a scar or it can be a decoration for a spiritual master. And Maharaj, I really beg onto your lotus feet to give me the qualification, to give me the intelligence that I never become a scar, if not a decoration to you. Krishna's consciousness is not achieved and awarded. This is what you have mentioned in one of your lecture, Maharaj. And this is what my current state is. So I really beg the mercy of all the Vaishnavas, Hari Guru, Vaishnava, and all to you, Maharaj, to bless me with the minimum requirement for the Krishna consciousness, this mentality. In one of the lectures, Maharaj, you mentioned that for the non-devotees, Maya convinces not to surrender to Krishna. But for a devotee, Maya convinces a devotee to postpone the surrender. And that is might be the state that is happening with me, Maharaj. So I really beg your mercy, I really beg your support to help me surrender as soon as possible so that I can be a fruitful instrument in your mission, Maharaj. So you have mentioned, Maharaj, that if we are not determined, we are useless in the spiritual world or this path of the spirituality. So Maharaj, I like to conclude with a Vaishnava Gita, what is mentioned. Ekaki Amaran Nahi Pai Gauri, Puri Ram Sankirtani, Tumi Kripa Puri, Sraddha Bindu Diya, Devu Krishna Ram Dhani. I'm really not qualified for anything that summarizes Krishna consciousness, Maharaj. And I really beg onto your lotus feet for your mercy. So, wish you all the very best, happy birthday today. And I really pray for your well-being, for your health, and your longevity, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Jaideep Prabhu. Now we request Sangeeta Biswas Mataji to you can give your offering. Mataji, Yeah. Hare Krishna, Prabhuji's and Mataji's. All glories to Guru and Gauranga.
I feel I am not at all eligible to talk about Guru Maharaj, but in spite of being someone who is full of anarthas, yet at times of stress, when I call out to Maharaj with all my hearts, I do get my answers through him, which immediately calms me down. So I once had a very stupid thought in my mind, and those were the initial days I had joined ISKCON and I taken shelter of Maharaj. So like we all do sometimes have funny thoughts. So did I too had a such thought in my mind. I thought that I'm not pretty. Will Maharaj still take me back to Godhead? So while thinking this, I was hearing a lecture of Maharaj, and immediately the next line of Maharaj was, "It's not the body that people love, but the soul. The body is a temporary vehicle." Then he said that he was once sitting in Varanasi in a Manikarnika Ghat, where he was observing how the dead bodies were placed on a pyre of wooden logs, and the close relatives of the deceased touched a flaming torch to the pyre. And Maharaj observed how the hair immediately started sizzling into nothingness, the flesh shriveled away, the organs started melting, and gradually the entire body was devoured by the flames. So this made me, like get my answer, and I feel that I am blessed, and it's His mercy that He reciprocates to me at times when I'm feeling sad, and I hope that He keeps this mercy on me always, and I live up to His expectation as a proper disciple. Um, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Now we request Rusha Mataji to come and give up her offering. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Shri Radhanath Swamy Namo. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimati Radhanath Swamy Namo. Namaste Saraswati Devi, Bhagavani Prasthaya, Devi Shesha Shunyavadi, Vashyati. It is a very auspicious day, and I'm very, very grateful that I have got this opportunity to speak about His Holiness Guru Maharaj. And Guru Maharaj has been very, we know that in all our lives, Guru Maharaj has been extremely merciful, and he's like a blessing to us. And I feel very small as a someone to glorify him. And if I remember and think about Guru Maharaj, I think about all the mercies that I have received from him. I have hardly gotten any chance to serve him directly. It was very, very minimal, small services that I got in the last few years. But through his words and through his blessings, the innumerous mercies that I have received have been extremely helpful and inspiring in my life. One experience that I remember is this year, Maharaj was visiting Calcutta during Nityananda Trayodasi. So we were actually serving in BP kitchen, and we did not get to see Maharaj coming to the temple. And
we could not actually sit in his lecture. We were hearing in the deity kitchen, Maharaj's words. And in my mind, I was hoping that, I was very sad, and I was hoping that I wanted to see Maharaj and see him, seek his blessing or offer Dandavat. But I was not able to because we were engaged in some service. And in my mind, I was just hoping and requesting Maharaj, Maharaj, I'm not able to. And then all of a sudden, when we were working, and all of a sudden we see Maharaj standing in front of us. There was a small window in DD kitchen, and Maharaj was standing just in front of us in that kitchen. And he looked at all of us, all Matajis, and he blessed us. So it was one of the most touching and most intimate reciprocation that I could experience this year. So even I have noticed that whenever there is calamities, there is distress that is happening in our lives. Every time that we have gone and requested for Maharaj's blessing, and we were completely distressed in some situation, Maharaj somehow mercifully through his words, and through Vaishnavas, he has always given us some way out of that distress and helped us and motivated us in this in that situation. Even in this Corona situation, COVID situation, when we are locked down and we are not able to meet devotees, Maharaj's word has been extremely inspiring for us. It is a great fortune that we have a family under Prabhupada's umbrella, but it is another Maharaj's mercy that within this family also we have got this new home as ISKCON Dhamdham, which is a big responsibility as well as an extremely big mercy of Maharaj that we are getting to serve here and serve as a family, a new family as ISKCON Dhamdham. So, as Jaideep Prabhu was saying that Maharaj always says that you can either be a scar or a decoration. So I'm repeating Jaideep Prabhu's words that Maharaj, today I seek your blessing that please don't make me a scar for you, and please bless me so that I can stick to my sadhana, I can stick to my sevas and keep serving Guru and Vaishnavas and Gauranga so that I can stay in bhakti always. And please, you always speak of humility. Please mercifully bless me with some humility so that I can recognize all my faults and keep my eyes closed to others' faults. So today I seek your blessing. I pray that I can stick to my sadhana, basically. So I would like to end by just saying, Vande Guru Shri Charanarvindam. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Now we request Sangeeta Chopra Mataji to come and give her offering. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Swamy Radhanath
कृष्ण महाराज, मैं यहाँ बैठ कर कुछ बोलना डिजर्व ही नहीं करती हूँ, क्योंकि सारे जितने भी अनर्थान हैं वो सब मेरे में है। यहाँ पर बैठ के आपके लिए कुछ बोलना मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ। आपसे बस यही प्रेयर है महाराज की अपना ब्लेसिंग्स हमें देते रहिए, ताकि मैं मुक्ति में थोड़ा आगे बढ़ सकूं और आपकी सेवा आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं। हमें तो इतना ये भी मिला हुआ है कि हम गुरु को अपने से चूज कर सकते हैं, बट आप लोग इतने कृपालु हैं कि हम जैसे लोगों को भी अपनी शरण में लेते हैं। और जब भी मेरी लाइफ में काफी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि मेरे अनर्थास की वजह से बहुत बार हम अपने जो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर आपके लेक्चर्स कुछ ऐसा होता है कि ऐसे ही लेक्चर हम उस समय हम सुन लेते हैं कि जिससे आप हमें अपनी गलती का एहसास होता है और पता चलता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जब भी हम मुश्किल में होते हैं आपका लेक्चर्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है कि कलकत्ता में हम लोग जैसे भूषण ने बताया कि हम लोग डेटी किचन में सेवा कर रहे थे। फिर सेवा हो जाने के बाद महाराज जहाँ पे रुके थे डिम्पल कोर्ट में, हम लोग वहाँ गए, कुछ सेवा था हम लोगों का। तो हम लोग सेवा करके जब वापस लौट रहे थे तो हम लोग लिफ्ट में ऐसे ही बात कर रहे थे कि काश ऐसा हो कि महाराज लिफ्ट से हम लोग निकले और महाराज हमें सामने दिख जाए। तो महाराज ने शायद ये छोटी सी प्रेयर भी हमारी सुन ली और हम लोग जैसे ही लिफ्ट से बाहर आए, गेट खुला दिखा, महाराज सामने खड़े हुए हैं। तो हम लोग एकदम सब शॉक एकदम, और महाराज इतना ही हम्बल है कि वो नीचे से मुंह करके दूसरी लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ गए। और वो दिन हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। इतना ये खुशी हुआ हम लोग को कि महाराज ये छोटा कुछ भी हमारा पूरा करते हैं। बस महाराज और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, बस इतना ही प्रे करती हूँ कि हमें भक्ति में आगे बढ़ सके और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे और मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, पूरे घर पे बनाए रखूँ। थैंक यू महाराज। Thank you, Mataji. Now we request Vishwajit Roy Prabhu to come forward and give his offering. Next, Aman Prabhu can be ready. Next offering. You face this. It's very auspicious day. Maharaj's birthday, happiness day, and we celebrate. And it is, unique opportunity that I have got due to this ISKCON platform. I got to say about such a big personality, you can say human personality, about whom I can speak a few words.
So it's a really, I'm so impressed that this is really a blessing from you. And I cannot express in my words that how can I express my joy of speaking of Swami Maharaj. So in few lines, I'm trying to say a few things, very few things about Maharaj. A monk living luster of devotion. You are the hope of the sky, massive to the devotees in dismay and despair. Your devotional deliverance drizzles and appease the anxiety erupts from the material deities, cascading tears of joy and happiness, emanating from your heart as blessings for the devotees. A constant obstacles and challenges on the path of devotion being reciprocated with the nectar of solution. When we are enlightened by your sayings and divine association, you are a tranquil twilight under the horizon, appear to make us come and cognition on the way of achieving devotion. You are kind and caring for all, communicating in silence, in sustenance of Sankirtan programming, the essence of Krishna consciousness, savior of mankind in real sense. That's what I would speak about Maharaj. Although this is very small part of Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Please bless me so that I can progress in my bhakti life. Thank you, Roy Prabhu. So now we request Aman Prabhu to come and give his offering. And next, after Aman Prabhu, Shushambar Gaurang Prabhu can come and give his offering. इसके ऊपर हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिवस है। महाराज काली भाव तिथि। मैं अपनी शुद्धि के लिए कुछ उनका लीला जो सुना हूँ, मैं उनसे कभी मिला, मैंने उनका कुछ लेक्चर सुना है और डिवोटीज के मुंह से उनके गुणगान सुने, तो अपने हृदय की शुद्धि के लिए मैं कुछ एक दो गुणगान बता सकता हूँ। महाराज ने मैंने सुना कि सागराही के बारे में बोलते हैं महाराज कि you should seek the essence। तो महाराज में बहुत गुण है, बहुत कुछ है, अनंत गुण है, जैसे उन्होंने बोला महासागर के तरह गुण है और मेरा एक गुण निकालने का भी क्षमता नहीं है, सार एसेंस, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो मेरा महाराज मेरे शिक्षा गुरु के तरह है और सबसे पहले जब मैं इंग्लिश महाकाव्य में आया था दिनेश प्रभु कृपा से, तो वो इंस्पायरिंग थे महाराज से, तो उन्होंने महाराज के बहुत सारे लेक्चर्स दिए। तो जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरा बेस है, जो भी मैं समझता हूँ भगवान को, भक्ति को, भक्तों को, तो महाराज की कृपा से है। क्योंकि भगवान को समझने के लिए उनका भगवान तत्व को, भक्तों को समझना बहुत जरूरी है। तो महाराज का ही लेक्चर उन्होंने दिया, तो मैंने महाराज का लेक्चर सुन के ही बहुत सारे लेक्चर सुना। शुरू में उन्होंने जर्नी होम बुक दिया था मुझे, तो मैंने अपना क्वालिफिकेशन, मुझे बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता था कि बैठ के पढ़ो, बोरिंग लगता था। उन्होंने पहले इंग्लिश में बुक दिया जर्नी होम करके और बोले कि उन्होंने बोला मुझे सजेस्ट करने की ये दो किताबें हैं जो मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे बात की। तो आई वांटेड टू
गिव यू, तो उन्होंने दिया इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश कमजोर है तो मैं एक भी बुक पढ़ा नहीं, तो बहुत महीनों तक पढ़ा नहीं, तो उन्होंने समझा कि शायद पता नहीं, तो पूछ रहे थे क्यों नहीं पढ़ रहे, मैं बोला इंग्लिश में पढ़ा नहीं। फिर से हिंदी दिया, प्रभुपाद का लीलामृत और महाराज का, और फिर फॉलो करने लगे मेरे को। तो बोलते हैं कि भक्त जो भक्तों को जो टेस्ट मिलता है वो दूसरों को देना चाहते हैं। हम भले ही पात्रता नहीं है मेरे में लेने की, बट स्टिल वो लगे रहते हैं भगवान से प्रे करते हैं हमारे लिए, तो इसका पात्रता बढ़ाओ, इसका जो ग्रहण करने का क्षमता है वो बढ़ा दो। भगवान बढ़ा देते हैं तो फिर हम दे पाते हैं इसको। तो प्रभु ने दिया, तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया पहला दिन सोचा चलो इतना लगे पड़े हैं तो कुछ तो होगा, तो कोई किसी के पीछे क्यों इतना लगेगा, कुछ तो होगा इसमें। इसलिए महीनों से बोल रहे कि पढ़ो, एक ही बुक पढ़ो, एक पढ़ो, प्रभुपाद का पढ़ो, राधानाथ महाराज के पढ़ो। तो फिर मैंने पढ़ा, पहला दिन पढ़ा तो आदत लग गया मुझे, मतलब मजा आ गया कि मतलब कितना सुंदर बुक है और कितना महाराज का उसमें गुणगान है। उसमें महाराज का टॉलरेंस दिखता है बहुत जगह, त्रिनाद सुनी चाहिए भक्ति में। महाराज भगवत नाम से वो मुझे पढ़ने के बाद समझ आ गया कि इधर के जीव नहीं है, हमारे जैसे बंद नहीं है। जैसे कि उन्होंने मतलब एक एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, उसमें से एक बताते हैं कि महाराज गंगा के किनारे 1 महीने तक एक गाजर खा के रहे। कोई रह सकता है कैसे? संसार में ही कोई बिरले ही होंगे कि एक गाजर खा के पूरा दिन, और गंगा माता से उनको हरिनाम सुनाई दिया पहली बार। तो मुझे समझ आया कि ही इज नॉट अ नॉर्मल लिविंग एंटिटी, ही जस्ट केम टू डिलीवर अस। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उनसे मुझे बहुत सारा शिक्षा मिला। उनका मैंने अनुभव किया कि कितने टॉलरेंट है। एक बार मैंने उनके जो सेवक हैं वो आए थे 2 साल पहले, और उन्होंने उनके बारे में बताया था कि महाराज एक बार किसी ने माला पहना दिया और स्टेज पे वैसे प्रवचन देने के लिए गए, और ऐसे लगाते हैं और सदर लगाते हैं महाराज जी क्या इसको उत्तरी तो उत्तरी था, और बाहर या अंदर माला था, और उसमें बहुत चीटी था। बहुत बार माला, सुगंधित माला में बहुत चीटी रहता है, और उनके पीठ को पूरा फुला दिया, और वो हंस के जैसा भाव है लेक्चर का, भाव पे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि महाराज हम देखते हैं कि जहाँ पे आनंद का अनुभूति करना होता है तो महाराज उसमें आनंद दिखाते हैं बाय फेशियल एक्सप्रेशन। जहाँ पे क्रोध है तो महाराज वैसा लीला में घुस के क्रोध दिखाते हैं महाराज, जोर से बोलते हैं, चाहे एंजाइटी का भाव प्रकट करते हैं महाराज। तो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आया कि महाराज को चींटी काट रहा है पीछे, और पूरा पीठ फुला दिया था। और फिर जब वो लेक्चर देके गए तो उनके सेवक बोले कि महाराज पीठ में बोले कि किसी ने जो माला पहना उसमें चींटी था, तो हमको एक मच्छर काटता है तो जोर से मार दो फट से हाथ में, और महाराज का पूरा पीठ फुला दिया। तो समझ आता है कि ये जो हमारे जो महाराज है बड़े बड़े जो होते हैं इनमें टॉलरेंस रहता है। तो वो महाराज हर लेक्चर में, जैसा कि सब लोगों ने बोला, त्रिनाद सुनी तरोरपि सहिष्णुता, तो महाराज उसी की मूर्ति है, त्रिनाद सुनीचेरा की मूर्ति है। मुझे थोड़ा सा समझ आया, मैं तो साफ रहा ही उतना समझ नहीं आता, बट थोड़ा बहुत जो समझ आता है। ह्यूमिलिटी, और दूसरा चीज मुझे अच्छा लगा, महाराज बार बार बोलते ग्रेटिट्यूड। तो जब भी महाराज बोलते हैं तो प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करते हो, ग्रेटिट्यूड, उनको जो भी मिला है उसके लिए वो आभारी है प्रभुपाद के, और वो पूरा जिंदगी उन्होंने गुणगान किया। लगभग 40-50 साल से वो कर रहे किए जा रहे हैं प्रभुपाद। हर लेक्चर में प्रभुपाद यूज्ड टू डू दैट, प्रभुपाद यूज्ड टू टेल मी दैट प्रभुपाद। तो मुझे लगा कि ऐसा ग्रहण करना चाहिए, पर महाराज अगर कृपा करें तो हमें भी वो आभार आएगा जो हमें मिला है, उसको थैंक यू बोलने का। मैंने सुना है कि थैंक यू मुंह से बोलते लोग, बट मैं भी मेरा भी कि बोलते कि हार्ट से फील करना चाहिए थैंक यू। तो जब फील करते तो बार बार बोलते और ऐसा फील थैंक यू करना चाहिए। तो ऐसा ग्रेटिट्यूड का भाव हमें भी है, और त्रिनाद जो महाराज चाहते हैं, क्योंकि दूसरों से भी चाहते हैं, क्योंकि महाराज आपने जैसा बताया चेतन महाराज ने कि महाराज जो चाहते हैं वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, उनका सारा लेक्चर पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। महाराज त्रिनाद सुनी चैनल बोलते हैं, मतलब वो वही इंस्ट्रक्शन है सबको। महाराज वो फॉलो भी करते हैं, वो चाहते भी हैं कि हम सब त्रिनाद हो जाए और हम ग्रेटिट्यूड रहे हमको जो भी मिला है। तो आज मैं कुछ दे तो नहीं पाया महाराज को, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं महाराज को दे पाऊं, क्योंकि वो सारे धन के सागर है, उनके पास सब कुछ है।
सारा उनमें सारे गुण हैं, हर चीज है, तो मैं कुछ देने के लायक नहीं हूँ, बट मैं प्रे कर सकता हूँ कि आप ही मुझे दीजिए, ये प्रेरणा भी सुनिश्चित हो जाऊं और ग्रेटिट्यूड का भाव है और भक्तों का संग में रहूं, ये प्रार्थना कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Aman Prabhu ki jai. So now we request Vinod Chopra Prabhu to come forward and give this. আমি সকালে 8:30 অবধি 8:30 অবধি দেখলাম, হচ্ছে না, তারপরে 9টায় দিয়েছে। I am very, very indisciplined. ওই তো এটা পাঠিয়ে দে। But still, I submit myself at your lotus feet and ask for whatever I have been doing till now, and hope your blessings will one day help me to come out of these problems that I am having and be as per your guidance. Maharaj, even though I have not done anything as per your instructions, but you have been very kind enough to give me your very close proximity, close proximity to you by getting virtue and blessings of our Shiksha Guru, Vallabh Prabhu. I remember very clearly when you had come last year for the Nityanand Fellowship celebrations, and we were all, asked, giving us seva at the place where you were going to stay. And when we were doing that seva, we were thinking that okay, if we can get some kind of Ashirvad from your Padishaya, then maybe I will be able to rectify all the negative things that I have in me and be able to be as per your guidelines and as per your instructions. When we came, we could not, when we came from the airport, we could not get near to you. But I went back with the thought that maybe tomorrow I will be able to get your Padishaya. And you were very kind enough, I remember very clearly, that I was doing the utensils cleaning seva in the daily backup room. And I never even knew, and then suddenly, I saw you were standing beside me on the wash basin and washing your hands before you would wait for the Abhisheks for Nityananda Prabhu. And I really cannot have any words for this. That you caught my feelings and you blessed me. Thank you, thank you, Maharaj. Thank you very much for whatever you have given to us. Thank you. Very good. Hare Krishna. Next one. Hare Krishna. So we will be having bhajan, and then there will be, with that there will be পাদ প্রকালন। এখন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান হচ্ছে, এখন ভজন হবে
তার সঙ্গে সঙ্গে গুরু মহারাজের উদ্দেশ্যে আমরা ওনার শ্রীচরণে পাদ প্রক্ষালন করব, তারপরে পুষ্পাঞ্জলি হবে আর তারপরে ভোগ নিবেদন হবে, সরি আগে ভোগ নিবেদন হবে, তারপরে পুষ্পাঞ্জলি হবে, তারপরে আরতি হবে। হরে কৃষ্ণ। कृपा बिंदु दिया कोरुए दासे बिना पे प्यार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरुए दासे बिना पे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरुए दासे बिना पे सकल सहाने फलदिया को निज मन स्त्रिया सकल सहाने फलदिया को निज मन स्त्रिया
स्मरण करावं चरण आहे कृपा लाभ होते वाले विशेष कृष्ण ठाकुर दयालो साधु तेरा से करुणा वैष्णव ठाकुर दयालु साधु दासी
चरणों में प्रार्थना करते हैं हम भजन करेंगे परम सुरूर से गुरुदेव व्रजवने
सेवा वैष्णव गोसा सेवा वैष्णव
এখন পুষ্পাঞ্জলি হবে আপনারা সবাই মুখে দাঁড়ান পুষ্প দেওয়া হবে हरे कृष्ण तीन भाग करते हैं ना सब हमारे पीछे पीछे बोलो सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए और जो ऑनलाइन में अपने अपने घरों में आप अपना फूल अपने गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर सकते हैं तीन भाग में विभाजित कर लीजिए ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला
वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहग्रजातां सहगना रघुनाथनितं तं सजीवां साद्वैतं सावधूतां हरिजनसहितां कृष्ण चैतन्य देवा राधा कृष्ण पादा ललिता ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान आलिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्य रूपं भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी मूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापा सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य भूते विप्रलंबर संबोधे বলেছিল জানি না गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगमनायते गौरविर्भाव भूमिस्त्वा निर्दिष्ट सज्जन प्रिया জাগি দাঁত পাঁচ আমি সামনে যাবো গরম বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি जगन्नाथाय ते नमः सकलपतरुभ्यश्च চিংড়ি মাছের থাকবে চারটে না কটা আছে বাবাকে তো একটা দিয়েছি না আর না আর একটা नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपका भक्ति शक्ति का हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते जय राम सुरगौपांगो सर्वस्व पदम भोजो राधा मदन मोहन दिव्या वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री राधा श्री गोविंद देव कृष्णालि सेव्य मनोस्मरामि श्रीमद रास रसारंभे वंशी वटतट स्थित दर्शन गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी नमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने पुष्पांजलि हम लोग देंगे, मगर यहाँ पे ना आरती प्लेट है तो कुछ नीचे मत, आप सामने आके इस बास्केट में तो वहां से जाके चरणों पे डाल सकते हैं आप। इधर पे ये हो जाएगा, प्रसादी हो जाएगी आपको। ये सब पुष्पांजलि समर्पयामि, सब लोग मिलके আরে নিচ ঠান্ডা হতো কিন্তু কম্প্রেসার ঠিক আছে কারণ উপর ঠান্ডা হচ্ছে एक ही भाग डालना है, माथा के ও তো অত দামে কিনলাম, 1 লাখ টাকা দাম প্রায় আসলে ওটাই তো কিনবো ওই ফ্রিজ আনলে মা অনেক খাবার এনে রাখা যাবে, বাইরের খাবার এনে তখন প্লেটে রাখলে কোনো অসুবিধা হবে। চিংড়ি মাছটা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে যায়। খেয়ে দেখবে ওটা তাহলে ফুটিয়ে রাখতো। दूसरी बात जल्दी जल्दी ऑफर करते जाइए, हम दूसरी बार मंत्र पढ़ रहे हैं, जिसका हो गया पीछे फटाफट माता जी एक साथ चले जाइए। सबाई प्रणाम करो, माता हाथ पीड़े माथा टेके वहां नहीं, पीछे नहीं, पीछे के प्रणाम तैयार करें। माता जी का ऊपर डाला था ये जगह फर्स्ट लेडीज एंड जेंट्स हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। ये सब पुष्प
पुष्पांजलि समर्पयामि गुरुदेव की माथा टेके हाथों जोड़े सवाई पीछे लेके तीन भागे फूल के रख में सुंदर नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने ये सब पुष्पांजलि समर्पयामि श्री गुरुदेव की परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा तिथि महामहोत्सव की जय। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज 70 व्यास पूजा तिथि महामहोत्सव की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा श्रील राधानाथ स्वामी गुरु महाराज व्यास पूजन महामहोत्सव की श्रील राधानाथ स्वामी गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद की এখন গুরু আসলে একটু প্রেয়ার্স হবে संसार दावा नलिढ दुका प्रणय कारुण्या घना घना मत्वा संसार
ঠিক আছে।
Swamy Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Pondicherry 50 Pondicherry Save of the World Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupad Brahmutsa Parivraja Stotra Shri Srimati Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Srila Radhanath Swami Guru Maharaj Vyas Puja Mahamahotsav ki Srila Radhanath Swami Guru Maharaj Adivak Tithi Mahamahotsav ki नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री द्वारकापुरी धाम की गंगा मैया की जमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की पतित पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे और ग्लोरीज टू द सेपरेट डिवोटी ग्लोरीज टू द सेपरेट डिवोटी
All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Radhanath Swamy Maharaj ki. Vidai Gaur